क्या हाल चाल, क्या हाल चाल अवनीत भाई। वेलकम वेलकम, हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून होने वाला है, 11:30 हो गया अभी, आधा घंटा है। अच्छा गाइज, आज थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है। मैंने क्या किया है, मैंने अपना कैमरा और अपनी चैट को राइट साइड में मूव कर दिया है, जैसे तुम देख देख सकते हो राइट साइड में। ठीक है, उसका रीज़न क्या है मैं बताऊंगा। एक बार ज़रा सारे लोग आ जाएं फिर मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है, मैंने राइट में क्यों किया है। ठीक है। और लवनीत भाई मैं बहुत बढ़िया भाई, तुम बताओ कैसे हो। आज बिना किसी देरी के गेंशिन स्टार्ट करते हैं। आर्कॉन क्वेस्ट आज फिनिश करनी है यार, और आई होप आज फिनिश हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी खींची जा रही है, खींची जा रही है। यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एनिमे द 100 गर्लफ्रेंड्स रियली 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 लव यू। इतना सारा प्यार, इतनी सारी मोहब्बत, क्या बात है यार। जिन एनिमेज में मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ, मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा आजकल। सब वॉच लेटर में पड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैंने कितने टाइम पहले स्पाई फैमिली देखना स्टार्ट किया था। उसके लास्ट के दो एपिसोड मतलब सिर्फ 40 मिनट्स, 20 मिनट का एक एपिसोड है। लास्ट के 2 एपिसोड पिछले 2 महीने से पेंडिंग पड़े हैं, मैं देख ही नहीं पा रहा। सोचो, यू आर क्यूरियस, तुम देख लो यार, देख के बताओ मुझे कैसा लगा तुम्हें। डिस्कॉर्ड दो। अरे मैसेज नहीं किया क्या डिस्कॉर्ड के अंदर, क्या चक्कर है। मेरे भी वॉच लिस्ट पर है, जस्ट लाइक माई हीरो एकेडेमिया एंड जुजुत्सु काइसेन। हाँ, अभी तो कह रहा हूँ वॉच लिस्ट से पड़े हैं बहुत सारे, बहुत। अरे ये देखो, यहाँ पेस्ट करके बैठा हूँ और यहाँ पे मैंने एंटर ही नहीं मारा। वाह, अब मारा एंटर। ओके, लेट्स गो। विवेक भाई हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज भी भाई गाना गा के सुनाना पड़ेगा, बर्थडे है मेरा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, गाना गा के सुनाना पड़ेगा। पेस्ट इशू ये मेरे साथ कई बार होता है। मैं क्या करता हूँ पेस्ट करता हूँ और एंटर मारना ही भूल जाता हूँ, और पूरी स्ट्रीम खत्म होने के बाद मुझे ध्यान में आता है मैंने तो क्या कहते हैं वहाँ पे लिखा ही नहीं कि मेरी स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है। तभी कहीं लोग क्यों नहीं आ रहे। विवी कौन, हेलो, क्या कहते हो विवी। पहले तुम्हारे अकाउंट में लॉगिन किया जाए, अपना लॉग आउट कर देता हूँ। चलो तुम्हारा लॉगिन करता हूँ। आईडी बताना, आईडी तो भेज दी तुमने मुझे, वो बताना। ओटीपी आएगा, ओटीपी बताना। लॉगिन करके अब सबसे पहले तुम्हारे उस पर पुल मारते हैं। किस पे पुल करना है तो बताओ पहले। कौन सा गिव अवे। अबे 500 सब्स के ऊपर गिव अवे नहीं करना है मेरे को। 5 मिनट सब्स कराओ जल्दी से। हमारे 500 सब्स होंगे तो गिव अवे होगा। हाइड तो कर लो। अबे आईडी हाइड क्या करनी है, पासवर्ड हाइड होना चाहिए। गिव अवे कैसा, ये स्टोरेज फुल रेड एंग्जाइटी नहीं देता भाई, बहुत देता है स्वैगर। मुझे डेली क्या कहते हैं इसको ना हिलाना पड़ता है, कभी कुछ करके। ठीक है, डेली मुझे कुछ ना कुछ डिलीट मारना पड़ता है। अभी तो मैंने ओटीपी भेजा भी नहीं, तुम्हारे पास आ कहाँ से गया। हाँ बीवी, कुछ ज़्यादा जल्दी ओटीपी आ रहा है क्या। अब भेज रहा हूँ, अब ओटीपी जाएगा। किसका ओटीपी बता रहा है भाई। बीवी लगता है फ्यूचर में जी रहा है। अब गया है ओटीपी, अब बता गया ओटीपी है। बीवी नूब अल्ट्रा वेलकम भाई। 500 सब्स के ऊपर दोबारा से गिव अवे होगा, और मैंने क्या कहते हैं पोल डाला हुआ है कि अगर गिव अवे तुम जीतते हो तो तुम्हें वेलकिन मून चाहिए होगा या एक्सप्रेस पास चाहिए होगा स्टार रील का। तो ज़रा हमें उसमें भी बताइए कि क्या तुम्हारी इच्छा है। ऑब्वियसली जिसको जो पसंद आएगा वो दिया जाएगा। किसी को एक्सप्रेस पास चाहिए होंका स्टार रील में, वो मिल जाएगा। किसी को वेलकिन मून चाहिए, वो मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि डबल गिव अवे हो जाए, अगर कोई स्पॉन्सर कर दे मेरे साथ तो डबल गिव अवे भी हो सकता है। वो तो 500 सब्स पे देखेंगे, फिलहाल 500 सब्स तो कराओ पहले। ट्राई गेमिंग हेलो। अल्ट्रा कहाँ से उड़ जाएगा यार, वेपन बैनर पे पुल करना है ना। हाँ समझ गया, पहले देख लो तुमने वो क्या कर रखा है।
वेपन्स बैनर के ऊपर पाथ कौन सा चूज किया हुआ है, कौन से वेपन का पाथ? अच्छा गाइज, मैं ये कह रहा था कि मैंने अपना कैमरा जो राइट साइड में किया हुआ है ना, उसका एक रीज़न है, तो उसको ठीक करूँ। ये मैंने अपना कैमरा राइट साइड में किया हुआ है, इसका एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि जब भी कोई स्ट्रीम को फ़ोन पे या टैबलेट के अंदर आप फुल स्क्रीन पे देखते हो ना, और अगर मेरा कैमरा लेफ्ट साइड में है स्क्रीन के, तो पूरे चेहरे के ऊपर ना वो चलना शुरू हो जाता है, चैट चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ राइट साइड में करने का, कि अब तुम लोग ज़रा एक बार मतलब कि स्ट्रीम को फुल स्क्रीन में करके देखो अगर फ़ोन में देख रहे हो, एंड टेल मी कि तुम्हारी जो चैट चल रही है वो लेफ्ट में चल रही है या राइट में चल रही है। मैं इसलिए राइट में आ गया, उस चक्कर में ना बहुत सारे लोग फुल स्क्रीन में देख नहीं पाते स्ट्रीम, है ना। जैसे कि मैं अगर अपने टैब पे फुल स्क्रीन कर दूं तो मेरी चैट लेफ्ट में चल रही है, विच इज़ मच बेटर। जो यूट्यूब की चैट है, अब मैं लेफ्ट में देख पा रहा हूँ चैट को, और मेरा खुद का चेहरा राइट साइड में है ना। देख लेते हैं क्या कहते हो, अगर ये बेटर लगता है तो ऐसे कर लेंगे, अगर कुछ और बेटर लगता है तो ऐसे कर लेंगे। अभी ये क्या बैठे हुए हैं, सब डिटेक्शन यूनिट, ओके, ये क्या बोला है पता नहीं। चलो, मैजिक चश्माओ, हेलो। फुरीना रिव्यू सुपर फास्ट स्पीड, फुरीना रिव्यू, फुरीना कहाँ से आ गई तुम्हारी अभी? मेरी चैट्स राइट में है। अच्छा, जब तुम फुल स्क्रीन करते हो तुम्हारी चैट राइट में आ रही है, मतलब मेरे चेहरे के ऊपर आ रही है। यार यूट्यूब को ना ऑप्शन देना चाहिए चैट को मूव करने का। टेक्निकली जो है आपका कैमरा है ना लेफ्ट साइड में होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रीमर्स का होता है। बेसिकली इट शुड बी लाइक दिस, मैं दिखाता हूँ एक मिनट को। इट शुड बी लाइक दिस, क्योंकि सब लोगों का ऐसे ही होता है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं रखता क्योंकि फुल स्क्रीन करते ही मेरी स्क्रीन पे चैट शुरू हो जाती है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसमें यूट्यूब में फुल स्क्रीन में कोई ऑप्शन आता है चैट को इधर से उधर करने का? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। अगर आता है तो मैं अपनी चैट यहीं रखूँ, क्योंकि राइट साइड में करने में पंगा है कि जो कैरेक्टर्स है ना वो छुप जाते हैं पीछे की तरफ, ये है। तो गाइस ज़रा एक बार मुझे बताना कि तुम फुल स्क्रीन पे जब करते हो तो तुम्हारा जो चैट है वो कहाँ नज़र आता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। लेफ्ट में नज़र आता है फुल स्क्रीन में, राइट में नज़र आता है? फिलहाल मैं इसको राइट में रख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैट इमोट्स, फिर से यहाँ आ जाओ, पुल। चलो जी वीवी, अब तुम्हारे अकाउंट पे पुल करते हैं। वेपन्स बैनर पे पुल करना है ना। हिमांशु वेलकम, मैं अभी आया हूँ एग्ज़ाम से। कैसा गया एग्ज़ाम? वीवी तुम्हारी भी राइट में आ रही है, मेरी लेफ्ट में क्यों आती है भाई? तुम्हारी भी राइट में आ रही है तो मेरी लेफ्ट में क्यों आती है? वीवी पक्का स्टाफ ऑफ होमा ही चाहिए। आर यू श्योर दिस इज राइट? पता लगा कुल मिला के 12 पुल हैं और मैं क्या कहते 12 के 12 किसी और पे कर दूं। मुझे चैट में तुम्हारी कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, ताकि बाद में अगर तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाओ तो चैट में बाकी 10 लोग जो यहाँ पर है वो गवाही दे सके मेरी। बुक चाहिए तो तुमने स्टाफ ऑफ होमा क्यों कर रखा है? इसलिए कि जिसका कोर्स चार्ट करते वो मिलता नहीं है, इस चक्कर में कर रखा है। बुक चाहिए, लेकिन ये ठीक है ना, इसको तो चेंज नहीं करूँ ना मैं, जो स्टाफ ऑफ होमा किया हुआ तुमने यहाँ पर। ठीक है, वीवी कह रहा है कि जो यहाँ पे स्टाफ ऑफ होमा रखा हुआ है इसको चेंज मत करो और सीधा पुल मारो, ठीक है। और वीवी इसके ऊपर 3 बार यस बोल चुका है। इतने पुल्स है ही नहीं। चलो 12 है ना, एक एक करके करेंगे। लेट्स सी, लेट्स सी। 1 कुछ नहीं निकला। ओह TTDS सही है। 2 फिर से कुछ नहीं निकला। 3 ओके, समथिंग समथिंग मेरी जान। आय हाय, सबसे घटिया फोर्सर वेपन, मतलब बहुत सारे इसको यूज नहीं कर पाते, फायदा क्या इसका? वीवी रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है। सोच यहाँ पे एक गोल्डन हो जाए।
गाइस लाइक दबा देना, भूल ना जाना लाइक दबाना। हार्बिंजर ऑफ डॉन 4 रह गए यार। ऑरेंज, गोल्डन, ठीक। मुझे लगता है ये कोई चमत्कारी पुल होने वाले हैं। मित्रनाक्ट वॉल्स, मित्रनाक्ट वॉल्स। लो जी फिशल का वेपन मिल गया, मित्रनाक्ट वॉल्स। ओके लास्ट वन, लास्ट वन, लास्ट वन, लेट्स गो। नथिंग। तुम्हारी हिस्ट्री देखें जरा, कितने पिटी हुए चल रहे हैं। जो 12 पुल किए हैं उन्हें हटा दो अभी। नो रिकॉर्ड, अभी वेपन बैनर पे कभी पुल ही नहीं किया। और वेपन बैनर पे तुमने कभी पुल ही नहीं किया। ये पहले 12 पुल मैंने किए वेपन बैनर पे तुम्हारे। वाह क्या बात है, बोनी कर दी तुम्हारी वेपन बैनर के ऊपर। कन्वर्ट करके देख लूं तुम्हारी शॉप के अंदर है कुछ। पाइमॉन्स बार्गेन के अंदर पड़े हुए हैं यहाँ पर एक मिलेगा यहाँ से और यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तुम निकाल चुके हो यहाँ से। 13 घंटे में रिफ्रेश होंगे यहाँ पे। नोप डिलीट हो जाता है वो। अरे डिलीट कैसे हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हो? डिलीट कैसे हो जाता है? ले लूं ये वाला या नहीं लूं? कर लूं? चलो ये ले लेता हूँ। एक्सचेंज करो, एक पुल और, लेट्स गो। इसी पे सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेट्स गो। हिस्ट्री डिलीट हो जाती है? अरे भाई ऐसे कैसे डिलीट हो जाती है? ये 0 थोड़ी हो जाएगी। मैंने अपना अकाउंट पिछले 3 महीने से खोला नहीं है, जो मेरा दूसरा अकाउंट है 3-4 महीने से खोला नहीं है। 6 महीने तक पुल ना करो तो पिछला डेटा डिलीट हो जाता है। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ यार, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो वी ट्राइड, वी ट्राइड ब्रो, वी ट्राइड। अब मैं अपना लॉग इन करके आर्कॉन क्वेस्ट शुरू करता हूँ। गाइस लाइक दबा देना सब। HSR व्हेन? HSR खेलेंगे भाई, वी विल। पर मुझे आर्कॉन क्वेस्ट पूरी करनी सबसे पहले। स्पॉइलर दूं? डार्क सोल मैं तेरे ऊपर रेबीज वाले कुत्ते छोड़ दूंगा अगर स्पॉइलर दिया तो। उफ, उफ, उफ। ओके लेट्स गो। तो अपने को अब यहाँ से आर्कॉन क्वेस्ट शुरू करेंगे और वी हैव टू वॉक अराउंड एंड लुक फॉर क्लूज। ओके स्टेज ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? ट्राई टू मूव अबाउट फ्रीली एंड गैदर क्लूज रिगार्डिंग द स्ट्रेंज ब्लड कलर्ड लिक्विड जो हमें मिला था। आइवन होमा जेड एमोस बेकन इन पास्ट, बट हिस्ट्री नहीं है। तो बड़ी गलत बात है यार, तुम्हारी हिस्ट्री क्यों नहीं दिखा रहा? तो पहले यहाँ चलते हैं जहाँ हमें लाइन लेके जा रही है। हाँ एक मिनट, एक तो नीचे ही है यार। एक तो यही है, इसी से बात करनी है। प्रोमोटर, किसका प्रोमोटर है ये? सर जी मेरी नॉन बिल्ड जूता और रिव्यू कर लो, कल 120 के मारा विद वेपो। भाई अभी क्या कहते हैं मैं करूँगा, क्या कहते हैं जो अकाउंट रिव्यूज़ हैं वो अकाउंट रिव्यू अभी आर्कॉन क्वेस्ट के बीच में नहीं, क्योंकि मेरे पीछे रिकॉर्डिंग चल रही है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन OBS और मेरे पास तुमने देखा ही है मेरा स्पेस नहीं है, तो एक बार जल्दी से फिनिश करूँ उसके बाद मैं सारे बैठ के रिव्यू करूँगा, अकाउंट सबके देखूंगा मजे से। ओम भाई वेलकम वेलकम, क्या हालचाल? बीवी कुन फॉर जस्टिस मिला कि नहीं? बीवी कुन को किसी का जस्टिस चाहिए भाई? I'm not. Of course I'm not. Please don't mistake. Then what are you doing here? बिना नेविगेशन के दिक्कत होती है डेस्टिनेशन पहुंचने में। नेविगेशन की जो ये गोल्डन वाली लाइन है ना, अगर ये ना हो फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड के अंदर तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। I'm a promoter for इतना गंदा मैप है ये। and I'm usually responsible for promoting our drink products.
I thought I could complete my task here quickly and return to Arthur headquarters. Levin, welcome to the channel. I've been here way longer than I anticipated. What the fuck? I just woke up at 11:40 just to see your stream. अरे भाई, thank you so much. I hope तुम्हारी नींद तुम्हें ऐसा ना लगे कि बेकार में खुल गई. तुम्हें मजा आया पूरा स्ट्रीम देख के. Oh, a promoter from Fontaine. अरे मैं कहूँगा आवाज क्यों नहीं आ रही? मैंने ईयरफोन्स तो लगाए नहीं हुए. फैंटा कंपनी, हाँ फैंटा नहीं फोंटा. दिस इज फोंटा. I'm so upset. It's all because of that Duke. अरे बस होमा चाहिए बेचारे को. भाई हमने पुल करने की कोशिश की तो थी, अभी 12 पुल किए, मिला नहीं. After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. एक नए सॉन्ग के हेडफोन्स ले लो. हेडफोन्स मेरे पास है भाई. आई ऑलरेडी हैव होमा. अच्छा सॉरी, ऑलरेडी हैव होमा मतलब मैंने पुल किया था. आर्कन सर आज स्मार्ट दिख रहे हो, जल्दी से लड़की ढूंढ लो अब. तुम बहुत दिनों के बाद आए हो भाई. हम तो रोज ही ऐसे स्मार्ट दिखते हैं. एक्चुअली क्या, हेडफोन्स तो मेरे पास भी हैं, ये पड़े हुए, पर गर्मियों में ना इनको लंबे टाइम तक पहनना ना कान में पसीना आ जाता है, तो मैं ये छोटे वाले पहनता हूँ. Let me take a moment and recall his exact words. I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. डेविड वेलकम टू द स्ट्रीम. ब्रो मैं होमा पुल कर रहा हूँ हुताओ के लिए. हुताओ है तो होमा पुल कर लो भाई. बट आई वुड से यू शुड गो एंड ट्राई एंड पुल हुताओ C1. अगर C1 मिल जाती है तो तुम्हारे लिए हुताओ खेलना बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, डैमेज तो हुताओ और भी दूसरे वेपन से निकाल ही लेती है, बट अप टू यू. और अल्ट्रा आ गया फाइनली अपनी असली आईडी से, अपनी मॉडरेटर वाली आईडी से अल्ट्रा आ चुका है यहाँ पे. हाँ छोटे वाले बेस्ट हैं, हैवी भी नहीं लगते हेड में. हाँ वही तो, इनको लंबे टाइम तक आप पहन सकते हो आराम से. गाइस लाइक कर देना. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid that they were completely ignorant of the value of credit coupons, despite living in the underworld, would ever possibly consider buying your drink. Let's just forget it. अरे वो आर्कॉन, मैं यही सेम क्वेश्चन पूछने वाला था होमा वाला. होमा का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि इफ़ आई हैड अ हुताओ, मेरे पास हुताओ होती तो मैं उसका C1 पुल करता पहले. जैसे राइडन है, राइडन का मैं पहले C2 पुल करूंगा, उसके बाद उसके वेपन निकालूंगा. मैं हुताओ पुल कर रहा हूँ ताकि अपने दोस्त के चाइल्ड के न्यू डैमेज से ज़्यादा डैमेज दे के उसका मजाक उड़ा सकूँ. जैसे उसने मेरे डी-लुक का उड़ाया था. डी-लुक का तो यार, डी-लुक तो बहुत ज़्यादा फॉलो अप हो चुका है ना. Anyway, that's how he rejected my proposal and asked me to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for him. Can you believe that guy? Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine. I know I should just let it go. I'm on his turf after all. His house, his rules. हुताओ से ज़्यादा डैमेज चाइल्ड करता है. मैंने कभी चाइल्ड का डैमेज हुताओ से ज़्यादा नहीं देखा. मैंने चाइल्ड न्यूक देखा है, बहुत कैरेक्टर्स का, बहुत स्ट्रीमर्स करते हैं चाइल्ड न्यूक, पर मैंने हुताओ न्यूक भी देखा और हुताओ का न्यूक मुझे हमेशा ज़्यादा लगा. शायद हो सकता है मैं गलत देख रहा हूँ. आशिदो वेलकम. और कैसी गई स्ट्रीम कल वाली है? How was Sid stream? Too slow. इतने उदास क्यों भाई वैसे, ये तो बताओ. आशिदो what happened? Who thought न्यू कैन डू बेटर इफ मेल्ट. अच्छा, और चाइल्ड का न्यू किस पे बेटर काम करता है? बट आई ओनली डू वेप न्यूक्स. कौन था वो वैसे? कौन था? कौन था आशिदो? हु आर यू टॉकिंग अबाउट? पहले चाइल्ड को क्रिट करवाओ देन न्यूक मारेगा. मेरा चाइल्ड देख लो ना, मेरा चाइल्ड 56% के ऊपर है. कहाँ गया मेरा चाइल्ड? ये रहा. माई चाइल्ड इज एट 53 183.
बेचारा वो अपना एएस अरीना ट्राई करता रहता है और न्यूक ही नहीं मारता, लेकिन जब न्यूक मारता है तब डैमेज अच्छा देता है। मेरा अबिस 36 जो है इसी की वजह से हो रहा है। वो चाइल्ड की विजन वापस आ गई उसके बेल्ट के ऊपर। चाइल्ड की विजन गायब नहीं हो गई थी, उसके कैरेक्टर मॉडल के अंदर भी गायब हो गई थी। इन गेम जब हमने चेक किया था, चाइल्ड की विजन वापस कैसे आ गई? कहा कि सिड के स्ट्रीम पे। अरे अपना सिड यार, उसी के स्ट्रीम पे तो मिले थे तो मुझे। जिंदगी में एक दो बार क्रिट मारेगा, वही तो। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। चाइल्ड की विजन जो थी वो यहाँ से गायब हो चुकी थी, उसके कैरेक्टर मॉडल में भी गायब हो गई थी। और एम आई थिंकिंग टू मच? चलो हो सकता आ गई हो। लुक फॉर ऑब्जेक्टिव्स इन दिस एरिया। ये अंकल से बात करनी है। कॉलिंस। Hey, I heard you crazy fools really did it. You bought tickets to support both fighters, didn't you? Well, did anything happen? आर्टिफैक्ट्स तो लगाओ बेचारे चाइल्ड को। या चाइल्ड का आर्टिफैक्ट इधर उधर दिया हुआ है मैंने एक्चुअली, उसके बावजूद ये 53 183 पर है। सोचो। Well, the next day we received a mysterious package, but we still haven't made any sense of the contents. So it is real. You didn't become cursed or anything like that, did you? Are you both still okay? Wait. Are you sure that it's still you controlling your bodies right now? ओ चाइल्ड का पीछा कर रहे। चाइल्ड का पीछा नहीं कर रहे, चाइल्ड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि गायब कहाँ हुआ वो। Paimon's not sure. What do you think, Traveler? Is Paimon still Paimon? हुताओ के लिए एलजी भी चाहिए। एलजी हुताओ के लिए चाहिए, मतलब एलजी क्या होता है? Oh, okay. Well, that's good. Yeah, you two don't seem to have changed at all. But I wouldn't let your guard down just yet. Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw away coupons like that just to satisfy your curiosity? Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn any coupons. When it comes to things like this, it's always the organizer who makes the real profits. Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. एलजी इज द वेंचरी सिग्नेचर वेपन। तो हुताओ के लिए क्यों चाहिए होता है? हुताओ क्या करेगी उसका? We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fanta. Oh, so it's the company that manufactures Fonta sponsoring the events? Paimon thought all of this was thanks to the Duke's support. Let's just say it's a mutually beneficial arrangement. They reached out to us first, hoping to promote Fonta products in the Fortress of Meropide. Anyway, Life of winners, you try and hello, take extra good welcome, care of welcome, yourselves welcome. these next few days, you hear? आज तुम वाकई में बहुत जल्दी आ गए। आधे घंटे के अंदर अंदर, विद इन 30 मिनट्स यू आर हियर। वेरी गुड। ओके, अभी किधर जाने का? अच्छा, और लोगों से बात करनी है। Hey, what are these papers scattered all over the ground? Are they registration forms or something? Maybe not. Every page has the Fontaco symbol on it. Maybe it's some flyers from the company. वीवी की हुताओ बहुत अच्छी है, नो डाउट। वीवी ने अच्छी अपनी हुताओ बिल्ड की हुई है। Okay. But if someone catches us, they could accuse us of trying to steal the company's secrets, couldn't they? अगर न्यू टाइम आउट फीचर आ गया है। अच्छा, कितना कितना टाइम आउट जाता है उसमें? Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow, and some researchers on the project have voiced concerns. भाई ऑफिस से काम से बाहर आया हूँ तो सोचा साथ में स्ट्रीम भी देख लूँ। अरे भाई थैंक यू सो मच यार। आई अप्रिशिएट योर पेट्रनेज, आई अप्रिशिएट योर वॉच टाइम। बस गाइस जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स करा दो यार, We have no मजा ही आ choice जाएगा। but to let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. We have decided to only conduct closed, small-scale trials for the time being. मैं क्रायो फ्लावर की शील्ड ब्रेक करके देन शिंगचो से हाइड्रो अप्लाई, देन हुताओ उस पर 130 के मार देती है। वेप डैमेज हुआ ना फिर तो। ये 500 सब्स में मोनेटाइजेशन का फीचर आया इंडिया में। क्या आ गया भाई? मेरे चैनल पे आ गया।
मोनेटाइजेशन का फीचर नहीं आया। देखो दो तरह की मोनेटाइजेशन है यूट्यूब में, एक है मेंबरशिप एंड सुपर चैट्स वाली मोनेटाइजेशन और दूसरी है चैनल पे वीडियोस पे ऐड वाली मोनेटाइजेशन। तो 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप अपने चैनल की मेंबरशिप्स ऑन कर सकते हो, सुपर चैट्स ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने चैनल पे वीडियोस चलानी है तो वो अभी भी 1000 सब्सक्राइबर्स पे ही है, पुराने वाली। वैसे वीवी को मॉड बनाया था ना, हाँ, फिर वीवी ने क्या कहते हैं धोखा दे दिया और मैंने फिर विद अ हैवी हार्ट आई हैड टू रिट्रैक्ट। Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides Fanta. But it sounds like things aren't going well at all. Let's put these papers back where we found them and make it look like nobody went through them. Okay, good. टाइम आउट ड्यूरेशन 10 सेकंड से 24 आवर्स तक दे सकते हैं। 10 सेकंड तो सही है, मतलब कि 10 सेकंड इज अ गुड ड्यूरेशन फॉर अ टाइम आउट आई फील। मतलब अगर कोई हल्की फुल्की न्यूसेंस कर रहा है तो उसको 10 सेकंड की टाइम आउट दे दो। वीवी ने क्या किया था लास्ट टाइम, यार अब तुम पुराने जो घाव है ना उनको कुरेदो मत। वीवी खुद ही बता देगा अगर वीवी यहाँ बैठा हुआ है तो। वीवी कम ऑन, अपना काला चिट्ठा दुनिया को बताओ। ट्राई फॉर 500 लगता है अब तो मुझे अपने फ्रेंड्स को आपकी स्ट्रीम शेयर करनी पड़ेगी। देखो तुम्हारे फ्रेंड्स अगर ऐसे हैं जो गेंशिन खेलना या देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर शेयर करना। आई वॉन्ट एक्टिव व्यूअर्स। और एक्टिवली ना भी आए तो कम से कम ऐसे व्यूअर्स हों जो जब टाइम लगे, जब उनको टाइम हो तो आपकी स्ट्रीम को देखना प्रेफर करें। एनीवन अप फॉर वॉलंटियर 10 सेकंड टाइम आउट के लिए? लो उसके नीचे विवेकन का मैसेज आ गया। अब समझ लो वो क्या कहना चाह रहा है। The wind rises. Too slow. I like to dodge this question. मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐसा कोई नहीं है तो ना भेजो फिर। हाँ रहने दो। Wanna grab something to eat? यू हैव ऑलवेज नोन कि मेरा जो फिलॉसफी है सब्सक्राइबर्स को लेकर वो क्या है कि 10 लोग जो बिल्कुल भी स्ट्रीम पर ना आए उनसे बेटर मैं वो एक बंदा प्रेफर करूंगा जो आ जाए। ठीक है, 0 से जब 450 पे पहुंच गया हूँ तो 450 से 500 पे पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे। दैट्स ओके। Alright, but remember that we bought this time with coupons, so let's make better use of it next time. अरे ये क्या देखिया अल्ट्रा द मॉड। अरे अल्ट्रा तो बहुत पहले से मॉड है भाई। Just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. अल्ट्रा तो बहुत पहले से मॉड है। अल्ट्रा बस अपनी उससे आता नहीं था, अपनी आईडी से आता नहीं था। What would you like to do this afternoon? क्या करना चाहिए मुझे? लेट्स गो टू द प्रोडक्शन जोन। अपने को कूपन्स चाहिए। लेट्स गो टू द After प्रोडक्शन working here जोन। so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? बहुत बढ़िया। Yeah, it's good to kick back and relax once in a while. कितने क्रेडिट कूपन्स हो गए हमारे पास? mysterious box, a bottle of crimson liquid. Paimon still doesn't know what to make of it. Do you have any ideas, traveler? Really? Then it looks like that part of the investigation led us nowhere. Well, maybe we'll have better luck tomorrow. Good night, traveler. Okay, objectives complete. Okay, so we've investigated 2 of the hidden rules. Paimon didn't think this prison would have so many weird things going on. We'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get anywhere. Yeah, let's skip work for now and put our time to good use. Okay, कहाँ जाने का? Behold!
slow. ओके नीचे जाना है ना, कितना नीचे? अबे यहीं तो जाना है। Hey, isn't that Vidoc over there? Huh. Is it just Paimon or are there fewer people than usual here today? भाग गया बीवी, भागा नहीं है, वहीं बैठा है। ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग, सोच रहा है कि क्या जवाब दूं। Seeing you at this time must mean you've already saved up a lot of credit coupons. Or at least enough to skip work. Seems you're getting into the swing of things around here. Impressive. Very impressive. Is it only me या वाइडॉक का वाइडॉक की आवाज़ चेंज हो चुकी है? पैराबॉय, डू यू रिव्यू अकाउंट्स? यस आई डू, लेकिन अभी क्या कहते हैं, क्वेस्ट चल रही है, आर्कन क्वेस्ट। ठीक है, अगर एक आध कैरेक्टर देखना है तो मैं देख सकता हूँ, बट अदरवाइज आई विल रिव्यू अकाउंट्स आफ्टर द आर्कन क्वेस्ट। वैसे इसमें सबसे अच्छे कैरेक्टर और सबसे अच्छा वेपन कौन सा है कि सब बैलेंस्ड है? मींस कोई टाइप का वेपन किसी और टाइप के वेपन से कमज़ोर है और किसी और से अच्छा है? ओम भाई बहुत ही लोडेड क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। इसके लिए तो मुझे स्ट्रीम बंद करके आधे घंटे तक तुम्हें वेपन्स और कैरेक्टर्स के बारे में समझाना पड़ेगा। If that's what you want to know, I guess you couldn't have come at a better time. बाकी अगर कोई है जो ओम भाई के क्वेश्चन का जवाब देना चाहे चैट के अंदर, सो यू आर फ्री टू। Huh? What do you mean it's a good time? By the way, welcome Paraboy, welcome to the stream. I've seen you in a lot of other streams. बहुत दूसरे स्ट्रीमर्स की स्ट्रीम पे मैंने देखा है तुम्हें। Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I wouldn't want them listening in without paying up. ओम भाई बीवी ने तुम्हारा इमोजी चुरा लिया है, गोट वाला। क्या कहना चाहोगे? Just tell us already. So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever, ever go near them at night. Even if you manage to avoid the guards, you might find something even more terrible there. समझाओ मत, बस बता दो कौन सा अच्छा है। देखो ऐसे अगर तुम वेपन की बात करो, कौन सा वेपन सबसे अच्छा है, ठीक है, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू आंसर। तुम समझ नहीं रहे। वेपन जो है कैरेक्टर पे अच्छा होता है। एक कैरेक्टर का वेपन यूजुअली अगर दूसरे को दोगे तो अच्छे से काम नहीं करता। वाई न्यूलेट लूज HP? ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई बफ मिलता है। अब यार क्या कह सकता हूँ। वीवी द गोट लाइफ ऑफ विनर्स कह रहा है। वाई न्यूलेट लूज HP? आई हैव नो आइडिया। कुछ तो उनको किट बनानी थी, उन्होंने बना दी। Something even more terrible. Like what? A group of cannibals. Cannibals? Cannibals? In the fortress of Meripede? Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared here. भाई ये स्टोरी तो कुछ ज़्यादा डार्क टर्न ले रही है। But what's even scarier is that they have a special proclivity. Since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms and keep them in the fortress forever. हॉरर, ये म्यूजिक मैच नहीं कर रहा वैसे इसकी बात से। कोई स्पूकी सा म्यूजिक होना चाहिए। होमा बेस्ट वेपन है, राइडन बेस्ट कैरेक्टर, जो कि अल्ट्रा को नहीं मिला। Paimon might already know what you mean by other forms. So that's what's going on here. Oh, Paimon's stomach doesn't feel so good. कोई सेंस नहीं बनता इसका, बिना वजह के HP लूज कर रहा है। यार मेरे हिसाब से ना कि कोई तो वेपन ऐसा है जो HP लूज होने के ऊपर, HP ऊपर नीचे जाने पे कोई तो बफ देता होगा। न्यूविलेट को हो सकता है खुद का बफ, खुद की किट से बफ ना मिलता हो, लेकिन किसी वेपन से मिलता होगा। न्यूविलेट का जो वेपन है वो ऐसा बफ नहीं देता। व्हेन द HP या जो फुरीना का वेपन है, सोचो फुरीना के वेपन के साथ अगर कोई कैरेक्टर न्यूविलेट की टीम के अंदर है तो उसको बफ मिल सकता है। तो उससे मुझे अभी न्यूविलेट की किट अच्छे से देखनी पड़ेगी। वैसे लवनीत, न्यूविलेट चार्ज अटैक में स्टैमिना कंज्यूम नहीं करता, वो बाकी उसकी प्लेस HP यूज़ करता है, दैट्स वाई उसकी HP लॉस होती है। ओह लो जी, आ गया जवाब। You two look pretty skeptical. No matter, learning the truth behind dark secrets isn't necessarily a good thing. I've got things to do too. I suggest you just act like I never told you anything. ऐसे तो हुताओ C1 है। हाँ बस ये मान के चलो। Trust him on this one? Oh, Paimon doesn't want her blood and flesh entombed here for all eternity. लेकिन हुताओ जो न्यूविलेट का जो चार्ज अटैक है, इट इज़ मच मोर सेटिस्फाइंग टू एग्जीक्यूट, मच मोर ईजियर टू एग्जीक्यूट
देन हुताओ। Oh, so that's how you see the situation. Huh. You know, Paimon does feel a little better about it now. When will all the secrets end? आर्कॉन क्वेस्ट के बाद रिव्यू करोगे अकाउंट? हाँ बिल्कुल। अगर एक कैरेक्टर देखना है, इफ़ यू वांट मी टू सी ओनली वन कैरेक्टर, तो मैं भी देख सकता हूँ, लेकिन अगर जैसे पूरा अकाउंट रिव्यू कराना है तो वो क्वेस्ट के बाद। चलो, एक से एक ज्ञानी भरे पड़े हैं इधर। भाई ओम भाई, तुम आते नहीं हो। जिब्बू की स्ट्रीम पे तुम जाते हो क्योंकि जिब्बू की स्ट्रीम पे एंटरटेनमेंट भी मिलता है बहुत सारा। हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट प्लस ज्ञान तो बहुत मिलता है। लेकिन यार उसकी स्ट्रीम भी अच्छी है। या अग्री, तो आप पुल करो। नहीं यार, मुझे पुल नहीं करना। आई वॉन्ट राइडन C2। आई वॉन्ट राइडन C2। Vidok isn't here, but the guys who went to work in the morning are back. Let's go ask them. डार्सी प्रिटी फेस। क्या प्रिटी फेस? इसका बोल कटर, इसका हेयर स्टाइल है। नहीं, 8 कैरेक्टर्स रिव्यू करना है। ओ आपको इसका लो। ओ 8 कैरेक्टर्स रिव्यू करना है, फिर तो टाइम लगेगा। फिर लेट मी डू द क्वेस्ट फर्स्ट। पीछे से मेरी OBS में फिजिकल रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना, और मेरी हार्ड ड्राइव में स्पेस बहुत कम है, तो आई हैव टू फिनिश दिस कंप्लीटली क्विकली। यहाँ पर गेंशिन की यूनिवर्सिटी है और स्टाररेल की भी है। ज्ञान का 14, सही बात है, ज्ञान का 14 है वो। आई वॉन्ट C3 R1 राइडन। मुझे भी चाहिए, लेकिन यार अभी C3 तक तो मुझे लगता नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। बाकी यू नेवर नो। अभी राइडन का बैनर आने दो, फिर पुल करूंगा। क्या पता किस्मत खुल जाए और मैं सब एक ही बार में कर लूं। Just stay away from me. ये वाला तो बोला नहीं, तो ये कैसे बोल पड़ा? आई जस्ट वॉन्ट C0 राइडन। हाँ भाई का राइडन ही नहीं है। नहीं, गिब्बू इज फुल ज्ञान का 14। What? What are you saying? You shouldn't go around saying stuff like that. What are you talking about? Listen, you should keep your nose out of other people's business. धमकी। हम तो लोगों से बातें करने जा रहे हैं, लोग हमें धमकियां दिए जा रहे हैं। Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. But if they're being so obvious about acting weirdly, do you think they might just be trying to lure us in? Oh, this is all getting way too creepy for Paimon. So you mean we still need to investigate some more? Okay, if you say so. ओम ब्रो वीवी से बच के। अरे ओम भाई को बहुत अच्छे से पता है वीवी को हैंडल कैसे करना है। क्यों ओम भाई? The wind rises. वीवी कहेगा मेरे को हैंडल करने की बातें हो रही हैं यहाँ पे। Too slow. मैं कोई दरवाजा हूँ जो मुझे हैंडल कर रहे हो? यार ये गोल्डन कलर की लाइन नहीं होती तो मैं तो फोर्ट्रेस ऑफ मैरोपीड में पूरा का पूरा गुम जाता। Behold! Search for it. तो जी फील्डिंग के पास आ गए। Fielding? मेरा कोई हैंडल नहीं है। What do you want? Criminals like you ought to be working right now. Catch my drift. We just want to ask you a simple question. Have you ever discovered anything odd during your nighttime patrols? Why are you asking about something like that? Whatever happens at night isn't your concern. All you need to worry about is getting enough sleep. Well... right! We've heard it happens a few times every month. Paimon has sensitive ears, so it makes it hard to sleep. वीवी कुन भाई के पास हैंडल नहीं है। अब देख लो वीवी अपना। वीवी तुम सर जेल में कितने दिन हो गए भाई? आई हैव नो आइडिया जेल में कितने दिन हो गए, बट तुम अपना क्या कहते हैं अपनी चाबी भरवाने के लिए लोगों को मसाला क्यों देते हो? वैसे मेरी पेटी 75 पे है, तो अगर पुल करना हो तो किस पे पुल करूँ? क्योंकि मेरे पास दोनों नहीं है। तुम्हारे पास, अच्छा तुम्हारे पास 75 पेटी, तुम्हारा गारंटीड है या 50-50 पे हो? Really? I see.
But it's not like I'm on duty every night. I also don't know how to ride a cycle. वो तो बहुत सारे लोगों को नहीं आती. And इसमें now कौन that सी you बड़ी बात mention है? it, I recall my colleagues talking about something like that before. They say that strange things tend to happen at night on pipe cleaning days. Lots of us don't willingly take those shifts. So, what happens at night on pipe cleaning days? And they just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. There are 3 pipe cleaning days per month, and it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want, and if they're real, then I can report the issue to my superiors for you. 10 pulls guaranteed हैं. यार लाइफ ऑफ विनर्स भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है. देखो आज के टाइम में ना आई विल नेवर टेल एनीवन टू पुल फॉर हुताओ, क्योंकि हुताओ एट C0 इज़ वेरी इरिटेटिंग टू यूज़. जहाँ तुम्हारा स्टेमिना ख़त्म हुआ नहीं वहाँ पर तुम मैक्सिमम डैमेज नहीं कर पाओगे. तो अगर हुताओ पुल करनी है तो हुताओ का C1 ज़रूर पुल करो, ठीक है. उसके बाद उसका वेपन तुम निकाल सकते हो, ठीक है. और करंटली अगर तुम्हारे पास जो टीम है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, पहले तुम्हारी टीम देख के बता पाऊंगा. हो सकता है न्यूविलेट तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो. दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन तुम्हारे पास करंटली वेपन कौन कौन से हैं. पता लगा न्यूविलेट निकाल लिया और कोई उसका ढंग का वेपन ही नहीं है उसका तुम्हारे पास, वो भी दिक्कत है. Oh, okay. Then we'll keep both ears out tonight. If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny, though. Even if I'm not on duty tonight, और someone will still ओम be वेलकम watching you. वेलकम टू द स्ट्रीम. Don't worry, we don't want any time added to our sentences. आज हमारी स्ट्रीम में 2 ओम हो गए हैं. ओम 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 2 ओम और आ जाए फिर हम बोलेंगे ओम 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 ओम. खैर समझ गया था तुम क्या बोलना चाहते हो विवेकन. Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? तो फिर पूरा अकाउंट ही आपको रिव्यू के देता हूँ. तुम मुझे अपने आईडी पासवर्ड भेजना DM पे. मैं तुम्हारा अकाउंट ओपन करके तुम्हारे वेपन्स वगैरह चेक करके तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम हुताओ बेटर रहेगी तुम्हारे लिए या न्यूविलेट बेटर रहेगा. Right, both are a possibility. But Fielding did say that tonight is a cleaning night. Paimon knew you would say that. Alright, sounds like we'll be up all night tonight then. Paimon just hopes the guards don't catch us. देखो कितने भी ओम आ जाए पर मेरे जैसा जिगरा किसी के पास नहीं होगा. ओम भाई नाम रखे. हाँ तुम फिर अपने नाम, ये सही ना, तुम नाम क्या खुद ही भाई लगा लिया. वो नेता नहीं होते, या जैसे वो ट्यूशन टीचर नहीं होते जो अपना ऐड करते हैं. फिजिक्स पढ़िए दीपक सर से, अपने नाम क्या कि सर लगा लेते हैं. ये आपका नाम क्या है, उसके लगता है उसकी बीवी भी उनको सर बोलती होगी. दीपक सर खाना खा लो. ओम भाई तुम उनमें से एक हो. तुमने अपने नाम क्या है खुद ही टाइटल लगा लिया भाई का. बाय द वे ये तो मैंने क्लेम ही नहीं किया अब तक. और ये क्वेस्ट भी अब तक चल रही है. अरे ये कब आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पे कब आया अबे. ये तो हम देखे ही नहीं. कोई नहीं, अब कहाँ जाना है. सोने. The wind rises. फिर जादू आएगा. आईला जादू है नहीं, जादू नहीं आएगा, जादू नहीं आएगा. Oh, I'm so tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the perfect chance for us to investigate. यस. Whatever. Just be sure to wake Paimon if she dozes off. Paimon's worried something might happen if you go alone. अरे ओम भाई मीन्स लड़की भी आ जाएगी तो भाई बोलेगी. देखो ओम भाई अब तुमने खुद का ही क्या कहते हैं गड्ढा खोद लिया अपने नाम क्या भाई लिख के. हैं कोई लड़की भी बोलेगी तो बोलेगी अरे हेलो ओम भाई, वेलकम ओम भाई, भाया ओम भाया वेलकम, हम आपकी स्ट्रीम देख रहे हैं ओम भाया. कौन है लगता है. प्रतीक वेलकम वेलकम. मैं बाहर हूँ, म्यूट पे हूँ. अरे मैंने कल ही फोटो सेंड किया था डिस्कॉर्ड पे, देखा नहीं क्या आपने. किसका फोटो, अपनी आईडी पासवर्ड का. Huh? Traveler? Did you fall asleep already? ओए ये क्या बेहोश हो गया. ओह अनदर विजन. विवेक व्हाट डूइंग. भाई क्वेस्ट चल रही है. ओम कह रहा मुझे नहीं बोलेगी क्योंकि ओम इज स्मार्ट इनफ नॉट टू पुट भाई इन फ्रंट ऑफ हिज नेम. चाइल्ड दौड़ रहा है. चाइल्ड
चाइल्ड रात को जॉगिंग पे निकला है। बताओ, हील्स वाले जूते पहन के चाइल्ड भाग रहा है। टैप 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 टैप। ये क्या हो रहा है? ये तो लोग चाइल्ड से मिले हुए हैं। अच्छा, विश के इवेंट का। ओ अच्छा, मैंने देखा नहीं था, भूल गया। नहीं कि लड़की तो मेरी जिंदगी में आ गई, आएगी ही जो भाई नहीं बोलेगी। अब तुम अपने नाम क्या गया, तुम्हारे शादी कार्ड पे लिखा हो है ओम भाई, तुम अपने शादी कार्ड छपवाओ। फलाने फलाने के सुपुत्र ओम भाई की शादी कांता बहन से होने जा रही है। तुम अगर गुजराती हो तो समझ में आता, फिर तो क्या दिक्कत है। वहाँ तो बोलते हैं अरे ये हमारे बड़े मोटा भाई ने ओम भाई और ये इनकी बीवी कांता बहन। पर तुम गुजराती तो हो नहीं, हो तो मुझे पता नहीं, आई कांट से। इनको पता भी नहीं चला कि चाइल्ड भाग गया। देख लो। Oh, it looks like you were just peacefully sleeping to Paimon. Well, what did you see this time? Child escaped via the pipes. वाह। Really? So we're finally starting to figure out what actually happened. But what about the cannibals? How do you explain them? तभी तो सलमान खान की शादी नहीं हो रही, क्योंकि सबको सलमान भाई बोलते हैं। सही बात है। Okay, well it's about time for us to get moving. Just be careful to avoid the patrolling guards. ओहो, स्टेल्थ मिशन आ गया है। अब हमें स्टेल्थ मिशन करना है। गार्ड्स कैसी कैसी, हम उनके ऊपर, सर के ऊपर से उड़ के पहुंच जाएंगे। Quit following me. ओके, किधर जाना है? उधर जाना है। ओके, तो पीछे पीछे जाना पड़ेगा। आगे से निकला तो गार्ड पकड़ लेगा। Careful. We'll get in trouble if the guards catch us. सलमान भाई को कुछ नहीं बोलना, उड़ा देंगे। अरे भाई अल्ट्रा। Squall and Fury. This should be the place. अरे पाइप हमने पहले कभी कैसे नहीं देखा अब तक। अरे किसको ऑनलाइन लड़की पुरानी, उसको तो पता भी नहीं चलेगा। देखेंगे अपने नाम आईडी ओम भाई, वो पता भी चल गया तो ज़्यादा खुश होगी। ओम भाई ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रखी है, कुछ ज़्यादा ही प्लानिंग कर रखी है भाई। ओ ये तीनों अभी भी यहाँ पर है। I know you. You were the ones we saw. Huh. You've got guts showing up here. You know who we are, right? Yes, the meat eaters, cannibals. You'd better leave now. Ain't nobody coming here to save you. What'd you say? Yeah, so what if they were? If you push us, we can make those rumors a reality at any time. Om bhai with overthinking. No, Om bhai with over planning. Hey, what's the point of all those rumors anyway? What exactly are you trying to do? I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories and act like you never saw anything, then I'll pretend that you never showed up here. अच्छा Yeah, जी। scram. Nothing worth seeing here. Huh? What did you say? Isn't that exactly what Boss said when he left? बॉस भाई, चाइल्ड को जेल में आए हुए 3 दिन भी नहीं हुए और वो गैंग का लीडर बन गया यहाँ पे। क्या बात है। Hey, do you know our boss? Whoa. We had no idea our boss was such a big deal. He always kept his identity a secret. So, did he have you come here to find us? Oh, so your child's crew here? Seems like he had no problem fitting in. We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So, unless he somehow told you those exact same words after that... Nothing goes as planned in this accursed world. Vivikun the philosopher. All right. I guess that's proof enough for me. I believe you. Wow, those dreams of yours sure come in handy.
gave him the business for a while and would always give him a hard time when he first came to the fortress of Meripede. But here in the fortress, the strong will always earn respect. He was working the longest hours and racking up wins in the Pancration ring. हाँ तो उसके लिए सेकंड रास्ता है अरेंज मैरिज, उसमें भी खुश हूँ. हाँ ठीक है, और क्या, अरेंज मैरिज इज नॉट सो बैड. You could always see how amazing he was, even when he was teaching us a lesson. अरे भाई आज सूरज कहाँ से निकला है. हंजो भाई आए पधारे हमारी स्ट्रीम पे 1 महीने के बाद. 1 महीना तो हो ही क्या होगा हंजो भाई हैं स्ट्रीम पर आए हुए. So eventually, we all decided to follow him. कुंवारे तो नहीं मरेंगे. खैर अच्छी बात है, तुम्हें लाइफ को लेकर कितनी श्योरिटी है. इट्स गुड. But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he heard that call again. कौन सी कॉल की And बात as हो his रही है. crew, if the boss wants something, then it's our job to get it done. So, we got to work and used the hidden rules that were here to make up and spread the rumor about the cannibal rule. लड़की बढ़िया होनी चाहिए, शादी तो कैसे भी कर लो. बढ़िया से तुम्हारी डेफिनेशन क्या है, पहले बढ़िया की डेफिनेशन बताओ. We just wanted to give him a better chance of escaping on a night after the pipes had been cleaned. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or guard. Wow, it sure is easy to exploit people's fear of the unknown. हंजो भाई 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर मेरी वो ऑन हो जाएगी मेंबरशिप. अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दो जो गेंशिन या स्टाररेल खेलने वाले दोस्त हैं. But has a child already escaped? Why are you all still coming here after pipe cleaning day? Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It should be a dead end. It leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from there into the sea, we're still way too deep. No one could ever reach the surface alive. But Boss still insisted on going in. It's like he was obsessed about it. So we told him that we'd pretend as if he never existed while he was gone. And that if Okay. he wanted to come back, he should wait for nighttime on a pipe cleaning day. That way, we could meet him here and help cover the whole thing up. भाई लेकिन इन तीनों के अलावा पूरा का पूरा बंदा तुम्हारे जेल में से गायब हो गया और मैनेजमेंट से लेकर कोई भी कुछ नहीं कर रहा. इट्स वेरी स्ट्रेंज. So you come and wait here through the night a few times a month just because of that promise? वाह क्या लॉयल क्रू है. Yeah, but it's been so long now. We already know in our hearts that he must have managed to escape बढ़िया इज somehow. इक्वल टू रशियन. विवेकन पेरेंट्स तो अच्छी लड़की ढूंढ के देंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई डोंट बी सो श्योर. Is it also possible that something unfortunate happened to him? Nothing could ever defeat Boss or slow him down. It's one thing we know for sure. अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे बॉस की ट्रायल देखनी चाहिए थी जब मिस्यूर नुविलेत ने घुटना पीठ में दे के मारा था चाइल्ड के. Okay. Paimon was just brainstorming possibilities. All right. Keep quiet and follow us. ओके लेट्स गो. किधर जाने का, इधर. अरे यहाँ पे Quit following me. Huh, too slow. Huh. The way up from here has been sealed off. It's impossible to get through. Let's Boss see. left by going down from here. It wasn't full of water at the time. Later, we came back hoping to have a look. That's when we found out it had been completely flooded. Oh, we can It's swim. impossible to navigate unless you're an extremely skilled diver. Do you think Child got trapped by the water? Not likely. We all know that Boss was an incredible swimmer. Really? Then have him come investigate. Pronto. Just be sure to tell us if ओह you get any news फ्रेमिने about Boss. फ्रेमिने. लेकिन एक मिनट, साला बीवी को इतना क्या इंटरेस्ट आ रहा है मेरी शादी में. भाई तेरी खुद की शादी कोई गारंटी. भाई बीवी दिल से चाहता है हर इंसान हर बंदे की शादी हो. It's getting late. We should leave before the guards come this way. Yeah, we learned a lot about what happened to Child here. Let's get going. अनिल जीटी वेलकम वेलकम. गाइस सब लोग लाइक दबा देना जिसने नहीं किया अब तक तो. अरे हाँ जो भाई गायब कहाँ हो गए. हम आपसे पूछे कुछ यार, बिना जवाब ही नहीं दिया आपने. बताया ही नहीं कहाँ चले गए. We finally learned some key information. Seems all of our investigative work has finally started to pay off.
When you said you knew a diver, you were talking about Fremine, right? If we ask Linny, he'll definitely have Fremine help us. Ugh. Why is Child like this? What was he doing going into the pipes? Not making our jobs लाइक तो easier, आते ही मार that's देते for हैं, sure. ये बात. Fortunately, though, it seems like it's only a matter of time now before we find out what really happened. Now that we can finally relax, I'm starting to feel super sleepy. Let's try to get some rest while we still can. Nighty-night, traveler! Nighty-night. Complete. हैं? It's morning already. ये क्या हुआ? It still needs more sleep. Huh? Wait, look over there. Isn't that? It's one of Linny's cards. Let Paimon see what's written on it. अबे ये क्या हुआ? बीच में लिखा आया कि क्वेस्ट कंप्लीट और अभी ये क्वेस्ट आगे से कंटिन्यू हो रही है. Maybe you haven't heard. TTG Games, welcome, welcome. Good afternoon. Everyone has the day off. Welcome to the today, stream. which Like makes it दबा दो the भाई. perfect time to do some investigating. एक्ट 4 स्टार्ट. अच्छा एक्ट 3 कंप्लीट हुआ लेकिन कुछ ज़्यादा ही अब्रप्टली कंप्लीट नहीं हुआ. मतलब बंदा सोया, एक्ट 3 कंप्लीट, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे आया, चला गया और एक्ट 4 स्टार्ट की भी नहीं दिखा रहा मुझे यहाँ पे अब तक. It's been a while since we last talked. Have you been making any progress lately? Let's meet at our usual spot in the factory area before lunchtime. I have new information. Ooh, today's our lucky day. We have the day off. From the sound of it, Lenny's been making progress with his investigation. Wonder what he's discovered. क्या बोला टीटीजी ने ये? अच्छा, शुभ मध्याह्न, शुभ मध्याह्न, शुभ मध्याह्न. We still have some time before we meet up. Let's talk with the दिखाएगा. people here for a bit more before we go. चलो भाई मैं चलता हूँ. ओके वीवी भाई, थैंक यू फॉर कमिंग. अब स्टार्ट हुआ है कैटेक्लिज्म्स क्विकनिंग. क्वेस्ट 4, लेट्स गो. किधर जाने का है? अच्छा इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन 36. Look, there are some people talking over there. Let's listen in on the conversation. If you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a hoot about a bunch of dogs like us? न्यू विलेट बिल्ड हो गया, बस नॉर्मल क्राउन करने हैं और बाकी टैलेंट इंक्रीज करना है. भाई अनिल भाई एक बार बिल्ड हो जाए तो हमें ज़रूर देना ट्राई करने के लिए. क्या पीता भाई? निगलेट ने चाइल्ड को सीधा बेल्ट से मारा था. बेल्ट से नहीं भाई, कौन पीठ में घुटना मारा था जोर से. Hey, speak for yourself, mate. I'm no dog. Oh, you think you're special or something? If you're here, then you're just a convict like the rest of us. I've heard that even if you're released after serving your sentence, going back to life on the surface ain't any better. वैसे Once a शुभ criminal, always a criminal. We're marked for life. वैसे शुभ मध्याह्न का मतलब क्या है? गुड आफ्टरनून. मध्याह्न आफ्टरनून को कहते हैं. सुजीन वेलकम, वेलकम टू द स्ट्रीम. तुम वेलकम टू द स्ट्रीम. तुम अब आ रहे हो इन देर में. अकाउंट देना ठीक है, चलेगा भाई. मतलब कि ट्राई करने के लिए दे देना. इतना थोड़ा सा भरोसा हो तो दे देना. हम कहाँ भाग जाएंगे, हमें डेली यहीं आना होता है. वैसे ये ऐसे ही पूछेंगे तो सबको ऐसे नहीं लगेगा कुछ गड़बड़ है. वो तो ऑलरेडी सबको लग ही गया कि कुछ गड़बड़ है, तभी इन्वेस्टिगेशन तो ऐसी करनी पड़ती है ना भाई. I don't buy that. Hey, how cool would it be if the whole world was destroyed by a giant flood and everyone had to start over from nothing? चलो मैं भी जरा कंपनी में जाने का इंटरव्यू के लिए. ओके भाई ओम, What All the kind best. of filthy bilgewater you spewing? I have family up there. You best shut your sewer hole with talk like that. बिल्ज वाटर. बिल्ज वाटर लीग ऑफ लेजेंड्स के वर्ल्ड में एक जगह का नाम है. Listen, things ain't so great on the surface, but who says that you have to leave? I've heard that you can still stay here and work even after you've served your sentence. Not bad if you ask me. न्यूविलेट इज द बेस्ट हाइड्रो कैरेक्टर आफ्टर फुरीना, बेटर देन आयातो.
ये तो है, आई एग्री। ठीक है, ट्यूसडे को दे देगा। लंबा क्वेस्ट है क्या यार? भी पार्ट 4 स्टार्ट हुआ है। Who wants to live in the ruddy overworld anyway? ये वाला ओम तो मेरे से बहुत बड़ा है, अब तुम देख लो। And what makes you think they want to hire someone like you? It's one of the great mysteries of the universe, how someone as useless as you is so confident. ये एक्ट 4 है, यस एक्ट 4 स्टार्ट हो गया है। लंबा क्वेस्ट तो है, देखो क्वेस्ट जो है टाइम टू टाइम लंबे होते जा रहे हैं। फॉन्टेन का आर्कन क्वेस्ट इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट टिल नाउ। Whoa. Sounds like they're really unhappy about the overworld. Speaking of which, Paimon never heard anyone use the words overworld or underworld when we were living up there. Is it only something the inmates down here say? That's true. कल अबिस रीसेट होगा, कल अबिस रीसेट होगा तो हमारे तो अबिस करने वाले ऑलरेडी हैं। The wind rises. I already have someone who does my abyss. शॉप भी रीसेट होगी, ये तो है। There's a group of people over there. Let's go listen in. मैं बहुत सारे विशेष इकट्ठा करूंगा। That's not a faucet. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a sudden? Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private. What's the matter? They're just looking to join in on our fun, that's all. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Fine. You're lucky we don't mind extroverts that much. You hear that, Quisto? We're nice. Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? Really? Are we that famous? You're kidding. How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. Word has it that you also caused quite the kerfuffle. A little mistake, huh? I like the way you put it. You see, people with a good attitude can join our group anytime, unlike some of the others here. Your group? I'm Quisto, and this is Lavaroon. People usually call us the Bombshell Bros, but don't Bombshell worry. Bros. We're not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive, and we blow minds on the regular. So, you two really like to gossip? Whew, you sure know how to embellish. No. You don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with whom, who has the latest rumors, who's not getting along. Wouldn't you like to know all that? इसमें लड़ाई का बातें ज़्यादा हैं। आर्कन भाई तुम्हारे दिमाग नहीं आ रहा गेम वालों के लिए कि बस ये बातें करो और ख़त्म कर दो। हम तो मूवी देख रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे। आर्कन क्वेस्ट ऐसी ही होती है ओम भाई। आर्कन क्वेस्ट इज ऑल अबाउट टॉक टॉक टॉक। गो देयर, इससे बात करो, वहाँ जाओ, उससे बात करो। दैट इज व्हाट आर्कन क्वेस्ट आर। इज क्रेटोस फिक्शनल कैरेक्टर? यस, क्रेटोस इज अ फिक्शनल कैरेक्टर गेम वाला। अगर अयातो और कोकोमी समन कर लिए तो मेरे अकाउंट में सारे हाइड्रो कैरेक्टर्स हो जाएंगे। माय फेवरेट एलिमेंट इज हाइड्रो। क्या बात है सुजीन, यू लाइक टू बी हाइड्रो, यू लाइक टू बी वेट। ए सीनाडेट वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई मैंने एक्सप्लोरेशन का स्पीड रन किया, 40 पुल्स कलेक्ट किया, फिर भी नहीं मिला शिंगचो। यार तुम्हारे तो अकाउंट को ज़्यादा कर्स लग रहा है मुझे। लवनीत भाई भी, लवनीत यहाँ भी टपक गया। लवनीत तो भाई बहुत पुराना बंदा है यहाँ पे। नॉट मॉड तुमसे तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं लवनीत भाई यहाँ पे। Whoa, all this info's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. I don't mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. भाई बहुत वियर्ड अकाउंट है मेरा। मैं देख रहा हूँ यार। 40 पुल्स तुमने अभी किए, इससे पहले कितने पुल्स किए थे 40 से पहले? Welfare meals. Talk about the welfare meals. Right. That meal we had yesterday was super delicious. Paimon can still taste it whenever she closes her eyes. Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. भाई अभी देखो 70 पुल्स पहले किए तुमने और उसके बाद 40 अब के 110 पुल के अंदर तुम्हारा एक भी शिंगचो नहीं निकला। लोगों के इतने में शिंगचो C6 हो जाता है। कमाल है यार। ओके ओम भाई,
थैंक यू फॉर कमिंग. जाते तो लाइक दबा जाना अगर भूल गए हो तो. Oh, so you're the one who made those delicious steaks. Amazing. You could be a professional chef. You are correct. I am a true professional. In fact, I even went to culinary school. Since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. Listen carefully. This little bombshell will help you learn what's really going on here in the fortress. मेरा तो C4 हो गया 30 पुल्स में. मैं वही तो कह रहा हूँ. वही, that's what I'm saying. मेरा भी इतने पुल्स में एक शिंचो मिला था येलान बैनर पर. कमाल है यार. होता है, मतलब कि I'm not surprised. Listen, kids. The power structure within the fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. अरे लाइक का बटन के आते ही मार ली थी. ओके जी, धन्यवाद. फॉन्टेन 100% हो गया आज. पैरा भाई क्या बात है. या सरीना वेलकम वेलकम. नॉट मॉड पैरासीटामोल फेंक के मारूंगा. क्यों, नॉट मॉड की तबीयत खराब है? You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. भाई मुझे 5 स्टार बहुत मिलते हैं पर 4 स्टार नहीं मिलते. मेरे को बेनेट C0 के लिए भी बहुत पुल लगे. बहुत ही वियर्ड अकाउंट है भाई तुम्हारा. बहुत ही Those who वियर्ड. have the Duke's attention get all kinds of special perks, even better treatment in the infirmary. अरे ना भाई लाइक दबा दो. आ गए हो तो जल्दी से फटाक से. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me, he's just faking it to get out of work. But did you know that Jurier was a talented researcher from the Fontaine Research Institute before he came here? There's no denying that. I don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora. Once you're in the fortress of Meripede, you're just another inmate like everybody else. मुझे लाइक करने के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं. अरे नहीं, कई बार होता है, दिमाग से स्किप हो जाता है. लोग आते हैं, मेरी इतनी खूबसूरत दाढ़ी देखते हैं और उनका दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो जाता है मेरी दाढ़ी देख के. उनको कुछ कुछ फील होने लगता है तो इस चक्कर में लाइक दबाना भूल जाते हैं. आर्कन क्वेस्ट में मज़ा आ गया था, कल ही कंप्लीट किया. आई टच ग्रास इसलिए लेट हुआ. आई कैन अंडरस्टैंड. ड्यूक कैसा लगा? मुझे बहुत सही लगा. Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Guess that's just how terrible of a guy he is. अभी जब एक बार ड्यूक की किट पूरी बाहर आएगी तब पता चलेगा हाउ स्ट्रांग ही इज. चैट में आने से पहले मैं सब काम कंप्लीट कर लेता हूँ. ओके. You mean he hit a woman? Wow. I never imagined he was that bad. But that Lorvine's also quite the odd one, you know? She's always gabbing away, got into a fight with a man, and she also got sent to the infirmary. Come to think of it, ओम I भाई की always चैट see में. her going to the sick bay every couple of days too. ओम, मैं 20 का हूँ, मार्च में 21 का हो जाऊंगा. अरे वाह, क्या बात है. हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. ड्यूक कौन? अरे राइजली का टाइटल यहाँ पे ड्यूक है ना. इज द ड्यूक ऑफ मैरोपीड प्रिजन. ही इज द हेड, तो सब इसलिए उसको ड्यूक बुलाते हैं. He has to be strong. In fact, he's on-field DPS. I think he's like 5-star Heijo. Wait a second. You don't think? Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on dates? Oh, come But on. it's really hard to imagine. After all, I do remember seeing Lorvine beat Jurier to a pulp that one time. And we might be overthinking things. ये सरीना, उस ड्यूक की बात नहीं हो रही. गेंशिन वाले ड्यूक की बात हो रही है. Yes, 5-star Cryo Heijo. Yes. Behold! Hey, you over there? Bavilier. Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? हे भगवान, ये फिर से कहाँ से आ गए? You TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. No, we are not. कोई नहीं खेलता उस घटिया गेम को. Hey, come on now. What's wrong with finding fellow Invocation aficionados? Anyway,
Care to join me for a game? नो, यहाँ तो टीपी खेलना पड़ता। अगर इन्होंने हमें फोर्स किया टीसीजी खेलने के लिए तो मैं बहुत ही गंदा लेटर लिखने वाला हूँ HoYo को। All right. No pressure. यस, थैंक यू। But why would you be looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? नहीं खेलना पड़ेगा टीसीजी, ना ही खेलना पड़े, बहुत अच्छी बात है। Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? It's all the same in my eyes. There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So I came over to say hi. Sure. आपका सेरेनिटी टीपॉट मैक्स लेवल पे है। मैं शायद मैंने सेरेनिटी टीपॉट में पिछले 2 महीने से नहीं गया यार। इस गेम में बहुत सारी चीजें मैं ना करना भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ। Great! Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right? Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. टीसीजी और टीपॉट क्या होता है मुझे भी नहीं पता। बहुत सुखी हो भाई, एएस अरीना बहुत सुखी हो। I thought you would have already heard everything by now. All right then. Did you have anything specific in mind? Or do you want me to just pick a topic? Us Archon by us, वही तो। Why don't you pick? We'll let you know if we've heard it already. मतलब यार टीसीजी चलो ठीक है, तुमने गेम बनाई है, बट डोंट फोर्स इट डाउन अदर पीपल्स थ्रोट। बहुत अच्छी अच्छी कार्ड गेम्स है दुनिया में, मैं इससे बढ़िया वो नहीं खेल लूँ लेजेंड्स ऑफ रूनटेरा। All right. Have you heard any strange rumors since you've arrived? Ben, did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? Yep. Yeah, so you've already met those two. They're quite a pair. They always keep an eye out for the latest happenings and gossip about everything. टीसीजी फन है अगर खेलना आता हो तो। मतलब ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट फन, आई एम जस्ट सेइंग कि लोग गेंशिन कार्ड गेम खेलने के लिए नहीं खेलते। I heard that there used to be a chef and a bartender before they were sent down here. You know how bartenders are, always chatting with customers. And chefs love to pass the time just hanging out when they're not cooking. कब स्ट्रीम करोगे LOR की? यार आई डोंट थिंक मैं LOR की स्ट्रीम करूंगा क्योंकि कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है उसके अंदर। इवन इनफैक्ट मैं ऑफलाइन भी LOR नहीं खेल पा रहा बहुत टाइम से। जब NPC ज़्यादा बातें करते हैं तो मन करता है टिमी फेंक के मारूं। भाई आर्कॉन क्वेस्ट है तो करेगा ही ना, ये गेम नहीं मॉल का है। Good to know. Do you have anything else to tell us? Let me think. Sounds like you want to hear something a little more tantalizing. Oh, did you know that the Duke was also a convict in the fortress of Meripede before? ये नहीं पता था वो मैं। Huh? Wait, are you serious? That's right. The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who knows how he ended up rising up to become the warden, though. गाइस लाइक दबा देना किसी ने नहीं किया हो तो। गलती से टाइप हो गया, इतना लंबा सेंटेंस गलती से टाइप हो गया। क्या बात है सुजीन भाई, उंगलियां बहुत फास्ट है तुम्हारी। To go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? I'm not gonna lie, I kind of respect that. A forbidden zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard of that. Where did you hear about it? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Anything else? Not that I Fast can think, तो है ही। but I'll be sure to tell you anything interesting I hear next time. You'll have to play a game of Genius Invocation with me first, though. मसाज करवा लेता अल्ट्रा। क्या अल्ट्रा को क्या हुआ? बॉडी में पेन? ऐसा कैसे? किसने मारा? लाइक करना था क्या? बिल्कुल भाई करना था। Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Linny. ओके लेट्स गो। किधर है लिनी का According to बच्चा? the card he left us, we should go meet him in the production zone. ओके चैनल मेंबरशिप कितने सब्स पे अनलॉक होते हैं भाई? 500 सब्स पे अनलॉक हो जाएंगे मेरे। 500 सब्स हो जाएं, अभी 450 हैं मेरे। 400 से 450 बहुत जल्दी हो गए, अब 450 से 500 होने में मेरे ख्याल से टाइम लग रहा है। 11K लाइक्स दिखा रहा है, कलयुग आ गया। अरे ये पता है क्या, ये YouTube की ऐप में दिक्कत है, ये मेरे साथ भी होता है। मैंने अपनी क्या होता है, मैंने क्या किया, मैंने अपनी YouTube ऐप को ना अनइंस्टॉल किया। अब अनइंस्टॉल तो होती नहीं है तो उसकी अपडेट डिलीट हो जाती है। जैसी अपडेट डिलीट हुई ना, सब ठीक हो गया। मुझे लाइक्स भी बराबर दिख रहा है, वॉचिंग भी सही दिखा रहा है। और जैसे इस ऐप को मैं अपडेट कर दूंगा ना, फिर से मेरे जो लाइक्स हैं वो गलत दिखाने शुरू कर देगा। 11,000 32,000 लाइक्स दिखाता है।
इनके यूट्यूब वालों को अपने अलग नशे हैं भाई। अरे अचीवमेंट क्या मिली अपने को? इन्वेस्टिगेट 2 ऑफ द हिडन रूल्स इन द प्रिजन टू कंप्लीट स्टार शाइनिंग इन द डेप्थ्स। ओके कूल। अरे ससुरा ऊपर जाना है। मेरा नहीं, किसी ने जिम में फुल बॉडी वर्कआउट करा इसलिए। मतलब किसी और ने वर्कआउट किया और पेन तुमको। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेरे स्पाइरल के वीडियो में 40-50 व्यूज़ दिखा रहा है और स्टूडियो में 150 प्लस व्यूज़ है। इतना डिफरेंस तो नहीं होता भाई। इतना डिफरेंस कैसे हुआ? अबे ये कहाँ खड़ा हुआ है? Huh? That look in your eyes. You found something? क्या ट्रांजिशन था उड़ता हुआ। Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of information. आप सायू और लिनेट भी कर लो फास्ट ट्रैवलिंग के लिए। हाँ सायू रख सकता हूँ। As expected of the legendary duo, you have my full and undivided attention. लेकिन इन दोनों से यूजुअली काम हो जाता I'd है। have never guessed that वॉन्डर और myself. येलान से काम हो जाता है। The rumors swirling about this place are unreliable after all, and Master Child probably went missing because he found a way out. भाई मैं पुल्स करना चालू रखूं या किसी और कैरेक्टर के लिए सेव करूं? तुम्हें जो 5 स्टार चाहिए था वो मिल गया कि नहीं मिला? He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. मिल गया? कौन सा मिला तुम्हें? 5 स्टार कौन सा मिला तुम्हें? इतने खुले में बात करेंगे वैसे ही किसी को शक हो जाएगा। ये तो एजेंडा चल रहा है। अरे ये जेल है, जेल में लोग ऐसे आपस में बातें करते हैं एक दूसरे से। भूताओ मिली है यार। देखो मेरे हिसाब से तुम्हें ना कंटिन्यू रखना चाहिए। उसका रीज़न है शिंगचो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम। शिंगचो और शांगलिंग 2 कैरेक्टर्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शांगलिंग तो फ्री में मिल जाती है, ठीक है, शिंगचो नहीं मिलता। लेकिन तुम एक काम और कर सकते हो। शिंगचो इस टाइम शॉप के अंदर आया हुआ है। अगर तुम शॉप से निकालना चाहो तो शिंगचो को शॉप से निकाल सकते हो और उसको बिल्ड कर लो। लेकिन अगर तुम कंटिन्यू करते हो पुल करना और इमेजिन करो तुम्हारी हुताओ निकल जाती है तो तुम्हारी हुताओ C1 हो जाएगी लगे हाथ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें तुम्हें अगर शिंगचो मिल जाता तो और भी अच्छी बात है। मैंने मेल किया है YT को। मेरी हर स्ट्रीम के ऐड रेवेन्यू में लिमिटेड दिखा रहा है, उसको रिव्यू करना पड़ रहा है तब जाके ऑन हो रहा है। अच्छा वो येलो आइकॉन आ जाता है हर बार। Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. His escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after him. Well, when you put it that way, it's obvious that only Fremine would be up to the task. Bingo! Is he around? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. It's the least I can do. We're all in this together, so it's only अभी fair दिखाता for हूँ। us AC to नेडेट अभी fulfill को our end of देखता the हूँ bargain. प्लीज। Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. Collecting information has always been our strong point. Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. And after that, he'll probably take another 2 or 3 days to return. अबे मेरा YouTube चलना बंद हो गया है टैब के अंदर। ऐप एग्जिट हो रही है बार बार। अरे मुझे क्या अपडेट मारनी पड़ेगी YouTube की ऐप? यार ये बड़ा गलत चक्कर है। यप अपडेट मारनी पड़ेगी। चलो अपडेट कर लेता हूँ, कोई नहीं। You can even estimate how long it'll take for him to get back? We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Traveler, what say you to meeting Ishwari, here 9 hello, days what's from now? up? We'll be able to pick up Fremine How while we're are at you, it too. Miss Parche? How's it going? न्यूलेट तो मिल गया होगा? Oh, and there's just one last thing we'd like your help with.
Though we can just sit back and wait for Fremene's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. प्रीमियम ले लो Fremene's no आर्कॉन। अरे master of प्रीमियम की बात नहीं है, मेरी disguise. ऐप Lynette's में कोई still दिक्कत आ रही है, ऐप working on अपडेट करनी getting पड़ intel रही from है। the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremene prepare for his diving mission. So, you are the only ones we can count on. Just got home from work. Oh, फिर तो तुम्हारे सोने का टाइम हो जाएगा। Are you F2P in Genshin? More or less. Small fish. वेल्किन वाली, जो भी कभी कभी वेल्किन लेती है। और जो करंट वेल्किन चल रहा है मेरा, वो वेल्किन तो किसी का गिफ्ट किया हुआ है, तो you can say. What do you want us to do? Will it be hard? Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be able to pull it off. मैं वो जेम्स परचेज नहीं करता, वो होते हैं ना जो पैक होता है बड़े हैवी वाले, वो परचेज नहीं करता। Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate the room and environs. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier, so it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. You've already met the head nurse, so she'll be less suspicious of you. पैरा बॉय ही इज फ्री टू प्ले, मुझे वेल्किन दे दो। अच्छा, पैरा बॉय वेल्किन देने की बात कर रहा है क्या? वो मैं ले सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्ट्रा क्या हुआ, बिजनेस में कोई लॉस वगैरह हुआ क्या? Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me alongside anything else you're able to discover. But also, there's no need to take risks. Don't forget, safety always comes first. My apologies, I just started rambling out of habit. It was almost as if I was talking to my younger brother. Oh, I binged this quest yesterday along with Newlet story. Binge कर लिया एक ही बार में बैठ के. That's impressive. But that's not a bad thing, मैंने right? तब तक न्यूलेट की स्टोरी क्वेस्ट ही नहीं की। मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये क्वेस्ट तो मुझे ओके लग रहा है। ये वाला आर्कन क्वेस्ट इज नॉट दैट टिंटिलेटिंग। All right, then we'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. Stay safe. पूछ रहा हूँ बस भाई, तुम्हारा मेंबरशिप 3 दिन हो गए एंड हुए, रिन्यू नहीं किया। ओहो अरीना को मेंबरशिप के लिए पूछ रहा है। मैंने तो भाई तुम्हारे चैनल की मेंबरशिप रिन्यू ऑटो रिन्यू पे डाली हुई, अपने आप रिन्यू हो जाती है। 6 hours 6 घंटे में कर लिया तुमने। आई फील इट इज मच मोर लॉन्गर। मेरा तीसरा दिन है इस क्वेस्ट को करने का, जो मैं डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे कर रहा हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल इट पिक्स अप। आई होप इट डज। Hey, stay here for now. Paimon will take a peek. There seem to be several people inside. Right. I feel like this. I ain't gonna give spoilers, but I'm itching to. Please don't. Please don't. It's not impossible. It's a bit hard to understand them from here, so... वाह, बंदे का मुंह इस क्वेस्ट में पहली बार खुला है, वो भी हद है यार। You know I won't. I know. Ishwari, you are free to spoil, and I am free to break Ultra's neck. हिलांस कारा ले लो। आर्कॉन अंक भाई, भागना पड़ेगा बहुत। Maybe tomorrow I'll be on my brother's stream though. Okay. Someone, please help! वहाँ कर देना। Whoa, are you okay? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomach ache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do. Freezing limbs, twitching fingers, and pale complexion. Could it be poison? Let me take a look. Please lie down over here. तुम्हारी Don't पतली worry, नेक। I'll सिद्धार्थ get you भाई to bed वेलकम। Here, क्या हाल चाल hold onto दोस्त? my shoulder and walk slowly. Along with all the bones in ultra body, सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब वेल भाई मेरे साथ 24 आवर्स चैलेंज करवाएंगे?
24 आवर्स का चैलेंज, शांति 24 आवर्स मौन रहने का चैलेंज। सिद्धार्थ क्या हाल चाल है भाई? You can do it, traveler! Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. आर्कन भाई एक बार गाना गा दो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। आई एम वेरी प्राउड कि मुझे गाना नहीं आता। गर्व है, फक्र है। My checkup has confirmed that he's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. Eh? Oh, that's good. But I'll continue my diagnosis of the patient now. Please, relax and take a deep breath. Don't sense serious damage to your organs either. Does it hurt when I press here? And here? Huh? But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. She is so cute, but she's really sus. अब मुझे लग रहा है She looks really sus. भाई एकदम तू बता, मुझे बता, गेंशिन देखने की आदत लगती जा रही है। भाई अच्छी बात है, इट्स अ गुड गेम। तू ऐसे ही गेम से दूर भागता है, इट्स अ गुड गेम। ये लॉली भी शायद प्लेबल है ना? यस, अभी रिलीज नहीं हुई बट शी इज प्लेबल। What about here? Does this hurt? Oh, I understand. So that's what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. so that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious. गाइस लाइक दबा देना किसी ने नहीं किया हो तो। And there have been other inmates complaining about the food. 27 लाइक्स हो गए हैं, 30 कर दो। I'll inform our head chef, Mr. Woolsey, of this problem as soon as possible. 30 लाइक्स कर दो भाई आज 30। Congratulations. The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? सिजविन प्लेबल कैरेक्टर है क्या? अभी नहीं है, होगी लेकिन। I had a dream that you had 51 likes. वाह, सपना भी आया तो कितना 51 likes का, वाह। Miss Levine, I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm gone. Very well. And she hopped away just like that. लॉली है तो बीवी तो पक्का निकालेगा। उसने फौज खड़ी कर रखी लॉली की। Hello. So how are you feeling now? His stomach ache's really bad. He was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. But you have noticed all lollies are healers except Nahida and Klee. याओ भी हीलर है क्या? मेरे पास याओ है नहीं तो मैं कह नहीं If सकता। Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. डार्क सोल यार 58 हो गए आज, बट आज भी रोता है राइडन के लिए। बहुत लोगों ने, यार मेरे पास जोंगली नहीं है आज तक। But it also looks like she's the only medic you've got down here. याओ इज हीलर टू। बाय द वे एक नई हाइपरब्लूम टीम जो है बहुत अच्छी हो सकती है, वो है फरीना प्लस याओ प्लस नाहिदा प्लस अपना क्या कहते हैं, याओ प्लस फरीना प्लस काजुहा और प्लस कुकी। ये हो सकती है। एक और टीम हो सकती है, नाहिदा डाल सकते हो याओ की जगह। एक तीसरी टीम हो सकती है फरीना, याओ, सुक्रोज एंड कुकी। Well, that's true. What do you mean that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sishuin take care of the sick and injured. VVB AR60 है, राइडन लेस। ओह उसके पास अब तक नहीं है AR60 पे, क्या बात है। आई एम सेविंग फॉर काजुआ, यू मस्ट, काजुआ इज अ मस्ट पुल। Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? वीवी ने तो HSR हर राइडन बैनर में लूज किया है। सेव करना पड़ता है ना भाई। That's correct. Sorry, I got a bit ahead of myself. Are you two also sick? Yes, sick in love. We've been sick a while.
I come back every once in a while for checkups and to pick up the medicines Miss Siegeween prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her... Chronic illness? Oh, क्या बात है. I must skip Risley for Kazuha. यहाँ you should Kazuha निकालो भाई. You could say she fancies herself as Miss Siegeween's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitations. Oh, भाई साहब. Hey, don't start arguing now. Please, keep it civil at least. Genshin का डेवलपर कौन है? Genshin का डेवलपर एक चाइनीज कंपनी है HoYoverse, जिसको चाइना में miHoYo के नाम से जानते हैं. So there's no need to argue over silly things like this. Risley sus too. Everybody is sus. It's a jail. I don't trust anyone in this prison. As you should. But मैं तो वेंटी पुल करूंगा सेकंड आईडी में, फिर उड़ा उड़ा के क्लियर करूंगा स्पाइरल. पर यार हर कोई स्पाइरल से, हर कोई वेंटी के उससे क्लियर उड़ता भी नहीं ना, जो कि प्रॉब्लम है. वेंटी आर्कॉन है. वेंटी का जो ब्लैक होल है, इट शुड बी एबल टू पुल ईच एंड एवरीथिंग. पता नहीं क्यों नहीं, सिर्फ छोटे छोटे को पुल करता है. Release. It's way too early for us to even think about that. And who the heck knows if we'd even be able to continue our previous lives? please allow me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurier, I don't want to see your face here again anytime soon. Kazuha should have been the Archon. बल्कि काजुआ बहुत बड़े-बड़े heavy characters को pull कर लेता है अंदर. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. See you later, everyone. Venti, Faruzan, C6, Bennett and C1 R1 Wanderer सब उड़ेंगे भैया ये टीम से. That's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that's... Well, his name is Jurier, but I hope you'll never have cause to remember his name. You really can't stand him, huh? I mean, can you blame me? Look, who would like someone who's as arrogant and obsessed with weird research topics as he is? A wild TT appeared. Lunch हो गया क्या स्कूल के अंदर? But there's no need to keep dwelling on him. Add shing with Ayato. I'll accompany you two for a while. सबको इकट्ठा करो और आयातो से शिंग करो. And I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. लेकिन अब एक और काम कर सकते हो. काजुआ से सबको इकट्ठा करो और कामेहामेहा सबको एक साथ. No, it's nothing. I'm back. Did you rest like you promised? Yep. Thank you for getting our medicine, Miss Siegeween. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days worth of medicine for you. Take 1 pill now, and then continue your bed rest. अच्छा घर पे ही हो आज. नारुतो उजुमाकी नेक्स्ट क्या पुल करोगे होंकाई? अरे नारुतो भाई, वेलकम. Do you still remember if we discussed the color of the pill that you should be taking today? होंकाई में मैं नेक्स्ट क्या पुल करूंगा अभी कोई आइडिया नहीं है. अभी रीसेंट मुझे दूर तक ऐसा कोई कैरेक्टर नजर नहीं आ रहा है जिसको पुल करके बिल्ड करूं, क्योंकि जो मेरे एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है वही अच्छे से बिल्ड नहीं हो पा रहे अभी. तो नए वाले को पुल करके मैं जेड्स वेस्ट नहीं करना चाहता. कामेहामेहा वाज सो मैं, लेकिन नहीं यार, इट वाज गुड. मतलब कि इट डज मोर डैमेज देन आयातोस ई. सोचो, काजुहा, न्यूलेट, जोंगली एंड फिशल बढ़िया टीम है. अच्छा तुम टेजर टीम बना रहे हो. आशिदो अभी आर्कन क्वेस्ट नहीं खत्म हुई यार. तुम कहाँ चले गए थे यार? आर्कन क्वेस्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं होती. I remember. You said it should be yellow. Yellow, huh? I understand. These are yours. Please, make sure to go to bed early after taking them tonight. You'll benefit from a good night's sleep. कामेहामेहा does shit ton of damage. हाँ, आयातो से भी better damage करती है. If you have C1 Nuvi, then no need Zhongli. Sorry. I like Shing better. वो भी सही है. Alright, then I'll also be on my way now.
I hope you feel better soon too. See ya! I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double check a few details, if that's alright with you. Then water hose. भाई मैं मैप पूरा अनलॉक कर रहा हूँ, आप आके बॉस मार दोगे when you are free. I need co-op boss achievements. तुम्हारा वर्ल्ड कौन से लेवल का है? Oh bless you, thank you, thank you. If you have Dia, then you don't need C1 and Zhongli. Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the traveler rest? Paimon can answer the questions instead. So his primary symptoms are abdominal pain with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? वर्ल्ड लेवल 2. अरे फिर तो मेरे बॉस में बड़े आराम से मार दूंगा यार. That's it. Alright then. Is there anything we should know besides to take the meds? होप आपका शिंग डैमेज करे. अरे पता है मुझे आयातो का वेपन निकालना है. वेपन निकल जाएगा ना तो आयातो मेरा मस्त डैमेज करेगा. बिल्ड तो ठीक ठाक है ही. No, his base constitution is quite good, so I'm sure he'll recover quite quickly after taking the medicine. Please make sure to stick to bland or less stimulating foods, and don't stay up too late at night. वैसे मेरा क्या कहते हैं न्यूविलेट और जो अपनी बंदी है फुरीना दोनों को निकालने का मन है, ऐसी बात नहीं है. पर आई वांट राइड एंड C2 वेरी बैडली. Got it. Paimon will hold the traveler to that for sure. Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. मैं तो थप्पड़ बरसाता हूँ वॉन्डरर से. We've been to lots of places together. He may look a bit under the weather now, but he's actually super strong. Yep. So you're the best of companions. Well, don't worry, he'll recover soon. मेरी ने कह रहा दिया किसको चाहिए. दिया किसी को चाहिए नहीं, दिया मिल जाती लोगों को. How do you feel? You slept for a really long time, but we never left. Well, now you can go back without a worry in the world. Remember to take your meds regularly. Super strong. भैया सुन आपको ट्राई करने मिलेगा मेरा अकाउंट C1 R1 वाला. ओके. सुकांता कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है? शाओ एंड हुताओ. आई थिंक हुताओ इज मच बेटर देन शाओ, बट इट डिपेंड्स. शाओ इज इजियर टू यूज, शाओ इज इजियर टू बिल्ड. हुताओ का तुम क्रिम्सन विच वाला डोमेन फार्म करते करते मर जाओगे ढंग से, और प्लस उसका C1 नहीं होगा तो उसको यूज़ करना इरिटेटिंग है. होमा निकालना पड़ेगा, लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई गेस प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के हैं. एंड वेलकम टू द स्ट्रीम सुकांता. गाइज लाइक दबा देना, भूल ना जाना लाइक दबाना. Thank you, Miss Sijuin. कट सीन आया क्या? अभी कोई कट सीन नहीं आया. अभी कोई कट सीन नहीं आया. Seems like a lot of people have been coming down. ओके किधर जाना है? Too slow. Squall Fury! हाँ यहाँ नहीं जाना, इधर जाना है. Easier to build Shao. At least is straightforward to build. Straightforward to build. Shao में इतने नखरे नहीं है जितना हुताओ के अंदर नखरे हैं. मेरे पास C6 CG है, कोई कैरेक्टर मारता ही नहीं, कोई कैरेक्टर मरता ही नहीं यार. C6 CG is a good healer. The new pet is slimy because he's octopus ना, इस वजह से. Hutao is more F2P friendly, but after complete build, Shao can do more damage at C0. Exactly. How to build and get Hutao? Save for months grinding, get Zhongli and get C1. Exactly my point. Quit following me. Behold! You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire time, you scared Paimon half to death! No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, go take my grilled fish and put down the Adeptus Temptation now! Paimon talked with Sijuin the entire time you were asleep. She seems like she's just a sincere nurse, and Paimon didn't notice anything unusual in the room. Are you sure we're not going off track with the infirmary? Whoa! You really are super thorough! All those tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up on! We've got to give the info to Linny! 6 महीने पहले सोचना पड़ता है कि
होता हूँ या निकालूँ या नहीं, वही करो, बहुत बहुत प्लान करना पड़ता है। अब जैसे मेरी राइडन जो है, मैं तुम्हें अगर अपनी राइडन का बिल्ड दिखाऊँ, इट इज़ वेरी एवरेज बिल्ड, लेकिन C2 होते ही और इनगल्फिंग लाइटनिंग होते ही वो बिल्ड OP हो जाएगा मेरा। Hutao mains will never admit that, they'll just say that her damage is good, yes it is, but it's locked behind other characters and her constellation as well. तूने कोई सर्वाइवर हॉरर गेम स्ट्रीम करी अब तक? नहीं भाई, अब तक नहीं की। कौन सी सजेस्ट करेगा ब्रो? जोंगली की बेस्ट टीम, जोंगली की बेस्ट टीम बहुत सारी है। जोंगली की बेस्ट टीम, तुम जोंगली को योइमिया की टीम में डाल सकते हो, तुम जोंगली को वॉन्डरर की टीम के अंदर डाल सकते हो। बेसिकली वो हर जगह जहाँ पर DPS जो है, अगर वो ना हो, DPS अगर व्हाट डू यू से डिस्टर्ब होता है, तो जोंगली की शील्ड लगाओ, काम करो। जोंगली इज वेरी फ्लेक्सिबल टू बी यूज्ड इन लॉट ऑफ टीम्स। शाओ वुड बी इजियर चॉइस कंपेयर टू हुताओ। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, शाओ इज इजियर। सिंगल जियो टीम के अंदर जोंगली इज वेरी गुड। वाह, क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है। जियो अंगा बंगा, बेस्ट टीम एफर्ट। जिसने भी ये क्वेस्ट की है, कैन दे टेल मी कि ये क्वेस्ट खत्म होने वाली है क्या? क्योंकि अगर ये खत्म होने वाली है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर ये क्वेस्ट अभी भी 1 या 2 घंटे की बाकी है तो फिर मैं कल करूंगा इसको। अनलिमिटेड क्रिस्टलाइजेशन, बेस्ट टीम एवर, जियो वंगा बंगा। मेरे ऑल्ट अकाउंट पे मोनो जियो खेलूंगा गोरो C6 के बाद। अभी तो इतो बिल्ड कर रहा। अभी एक्ट 3 में ध्यान देने लायक है क्या कुछ? एक्ट 3 के अंदर, एक्ट 3 बड़ा नॉर्मल था। एक्ट 3 में कुछ ऐसा खास ध्यान देने लायक नहीं था, बट हाँ, देयर वर सर्टेन थिंग्स। स्टिल 45 to 1 आवर रिमेनिंग, 45 to 1 आवर रिमेनिंग। ओके, तो आई थिंक मुझे कल ही करनी चाहिए आगे। What do you mean by which kind of Zhongli? There is only one kind of Zhongli and that's a shield bot Zhongli. The quest is 75% done. तो एक काम करते हैं, 45 मिनट्स की ना, तो चलो कंप्लीट कर देते हैं। 2 बजे तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद अकाउंट रिव्यू कर लेंगे और उसके बाद मैं थोड़ा स्टार रिल खेल लूंगा। No, we just worked our shifts according to the schedule. Nothing weird happened. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. मतलब मैं स्किप कर सकता हूँ क्या एक्ट 3? यार मैं कहूँगा स्किप मत करो, क्योंकि एक आध पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ना बहुत अच्छा होता ही होता है। मैं जरा पानी पी लूँ 1 मिनट। Did you wait for 9 days? 9 days for what? अच्छा, लगता है आशिदों ने अब तक DPS जोंगली नहीं देखा। We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago, and as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait, why is she getting involved as well? In this quest you have to wait for 9 days. अब तक तो नहीं आया वो 9 days वाला। You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough. In fact यहाँ पे भी लिखा आया था 9 days later, तो हो सकता है कि वो 9 days हो। तेरा हेडफोन्स कहाँ गए भाई? हेडफोन्स यहीं रखे हुए हैं, पर अभी लगाने का मन नहीं कर रहा। तो ये छोटे वाले पहने हुए हैं, 300 रुपए वाले। Infiltrating a guarded stronghold Then it's is a 75% different done. kind of फिर job इसको from आज a पूरा कर ही one-off देते हैं। investigation. We want to avoid using the same faces over and over and reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. सुजीन की चैट में सोगी, अच्छा अकाउंट भी खेलने को मिल रहा है फ्री विद वेल्किन एवरी मंथ। किसका अकाउंट खेलने को मिल रहा है फ्री? Whose account? So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going well for her. Perhaps that's true. You are both very good people, and we've come to appreciate that more than anyone else.
Unfortunately, there's still one thing that could get between us, lest you've forgotten. The matter of our respective loyalties. एक HR है, एक HR कौन HR है? By the way, sir, I've got 5049 primos and 2 pools saved so far. अच्छा 5000, तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट कितने pools हो गए हैं? Less than 50 pools. 40 to 50 pools तुम्हारे पास इकट्ठे हो गए. अच्छी बात है, अच्छी You've बात है. mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui. I can understand that feeling. So I assume you're just helping us out of the kindness of your hearts? Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to help us in the future too. 33 pools. Since I see you as friends, 32 then it's pools, even okay. more important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. Glad to hear it. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. मैं भी चेक करता हूँ मेरे पास कितने pools बचे हैं Is इस now टाइम. really a good time to go over? According to my observations, Sigewin always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's well-being. मैंने मैक्स 240 पुल सेव किए हैं आज तक. मैंने इतने नहीं किए. मेरे तो आज तक मैंने जो पुल सेव किए हैं आई गेस 120 130 के राउंड पुल सेव किए हैं. अभी चेक कर दो मेरे पास कितने हैं. आपके पास 70 कुछ हैं. अभी देख लेता हूँ. 4.0 के एंड के 10 दिनों से ही सेव करना चालू किया था मैंने. ओह Okay, then let's head over right away. 240 प्रीमोस या 240 पुल्स भाई. मेरा मैक्स 280 था. अच्छा मैं भी चेक करता हूँ मेरे कितने हैं. लेट्स सी. मेरे पास अगर मैं शॉप में जाऊँ, क्रिस्टल टॉपअप, पाइमन बार्गेन, परचेज विद प्रीमो जेम्स, इंटरट्वाइंड फेट 87 यहाँ पर है. 87 ऐसे हैं और 87 ऐसे हैं यहाँ पे. और मेरे पास इंटरट्वाइंड फेट्स और कैसे हैं? 9 यहाँ पे है. तो 87 और 9 कितने हो गए? 95 नहीं 96. 87 और 9 यहाँ पर है मेरे पास. 96 मेरे पास पुल्स अभी हो गए हैं सेव. और मुझे लगता है कि अगर अगले 2 पैच तक भी राइडन नहीं आई तो मैं 100 मेरे पास 300 पुल सेव हो जाएंगे राइडन के बैनर तक, है ना? थैंक यू नहीं बोलोगे भैया? अरे थैंक यू भाई, थैंक यू. बिल्कुल, इट्स ऑल मोस्टली बिकॉज ऑफ यू. तुमने मेरा क्या कहते हैं जो वो क्या है क्या कहते हैं अबिस क्लियर किया है, उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई है. तो अगर राइडन अगले 3 बैनर तक नहीं आती है तो मेरे पास बहुत सारे पुल सेव हो जाएंगे और मेरी राइडन डेफिनेटली C2 तो हो ही जाएगी. क्या कहते हो? Freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Squall and fury. हमारा भी करा दो. करना पड़ता है, करना पड़ता है. मोबाइल पे अबिस किया क्या? हाँ मोबाइल पे किया. Strange. Lynette? As expected, Sigewin isn't here, but why isn't Lynette here? No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd find a way to let me know. मेरे पास 90 पुल्स और मैंने फॉन्टेन स्टार्ट भी नहीं किया. तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो फॉन्टेन को? सारी की सारी क्वेस्ट एक बार में बैठ के करोगे क्या? Unless 4.3 के फर्स्ट हाफ में राइडन, तो मतलब कि पूरे 4.3 तक मेरे पास 300 पुल सेव हो जाने चाहिए. सही यार, मेरी किस्मत सही रही तो मेरी राइडन C2 हो जाएगी और मुझे एनगल्फिंग भी मिल जाएगा. ये तो बहुत बढ़िया है. Let's see if there are any clues around here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Okay. गाइस किसी ने लाइक नहीं किया तो कर देना. There are some books here and a few files. They all look like medical records. Advanced nursing, how to raise the spirit of your patients, a quick guide to the psychology of emotions, and the meaning of laughter. 290 तक पुल हो जाएंगे कंफर्म. हाँ फिर तो मेरी इस राइडन आराम से C2 हो जाएगी 100%. एक में अगर 50-50 हार भी गया तो भी मेरी कंफर्म हो जाएगी. लाइक करना था.
Raiden is Sijuin would be interested in these kinds of things. C2 Raiden is all you need. तुम्हारा अभी आराम से क्लियर हो जाएगा. She even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it because she's a Melusine? Or does she have a need to understand her patient's emotional state? I still cannot believe कि Sijuin एक Melusine है. यार Melusines अलग हैं. They're total furry. Sijuin इंसान लगती है. Raiden simp. I'm not a simp. I'm a Raiden appreciator. There is a difference. Seems quite normal to me. These are skills that would come in handy for a nurse from time to time. Raiden from scratch है क्या आपका भी? नहीं मेरा Raiden already built है भाई. मुझे उसकी 2 constellation निकालनी है और अगर वो जल्दी निकल जाती हैं तो फिर मैं उसका वेपन पुल करूंगा. None of the beds have any signs of having been slept in, except that one over there. आपके अकाउंट से मजा आया 43 CR वाला चाइल्ड क्रिट करा के. अरे भाई 43 CR वाला चाइल्ड क्रिट करा के. मेरा तो क्या कहते हैं इस टाइम चाइल्ड का करंट क्रिट रेट 53 है. Who's your favorite character in Genshin? So far मुझे इत्तो और काजुआ पसंद है as characters. That's must have used, right? You said she was pretending to be sick. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest while she left to retrieve the medication. Nahida and Klee are the best at what? Which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. Oh, Lynette को किडनैप कर लिया क्या? Suzine, Nahida and Sijuin are the best lollies of game. अच्छा, इसके रिस्पॉन्स में ईश्वरी ने बोला Nahida and Klee are the best, including Chichi. As per vibe check, Itto is best character you want to be nearby. Exactly. Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. And इस बार का स्पाइरल मैं क्ली से ट्राई करूंगा क्लियर करने की. मेरे पास तो क्ली है ही नहीं. मेरा कैसे क्लियर करोगे? Let's look around here for some more clues. Don't panic, just take another look. A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, "Out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards." Okay, but Lynette is strong. She'll be fine. And she has a vision too. Nuvlet को osmanthus wine पिलानी है अब. भाई वो पानी पीता खाली. He's a water taster. UDM के अकाउंट में है क्ली. अच्छा. This is that all? The back. This is. Show me now. हो गया इंटरव्यू मिल गया. ट्यूसडे से जाना है. अब 8 AM से 5 PM तक अप्रेंटिसशिप मिल गया. Congratulations ओम. Congratulations. नौकरी मुबारक हो. अरे क्या हुआ? लेनी वाकई में किडनैप हो गई क्या? That look on your face. Paimon's reading it now. What will happen if Zhongli and Nuvlet meet? Order. देखा मैंने मीमी वाला. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No. Could she have? Is she already? Writhsley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Ooh. Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. Yes, that is a crucial question. Writhsley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Writhsley. We're a completely different story, though. I'd like to know that too.
Why did he only go after her? Don't panic. Just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. Wait, you're right. Wait, but that means the fact that Fremine was able to leave the grounds. Could Wriothesley have let him go as well? But what does he gain by letting Fremine leave like that? So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Wriothesley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. But purposefully अगर उसको leave करने दिया तो why does he want Lenny to be alone? कुछ plan कर रहा है क्या? Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down. Don't be like this, Lenny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. I was the one who failed to protect them. Ultrasound गए. I'll go talk to Wriothesley. Hey, don't be reckless. Traveler, please talk some sense into him. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. इसको बचपन की याद आ गई. लिनेट एक बार वो पहले भी abduct हो चुकी है ना इस चक्कर में. I have to go. I'll find a way to get them back. He's rushed out the door. After him. Ultra गया खाना खाने. I'd rather date Chlorine instead of doing this. Everybody rather date Chlorine than do literally anything else. Oh, Sijwin सब चुपके सुन रही है यहाँ पे. मुस्कुरा रही है. Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. Sijwin मुस्कुरा रही है. She's sus. She's smiling. क्या प्लान है इसका? It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Is she evil? क्या ये बुरी बंदी है? क्या ये बच्ची गलत है? Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Ooh, I really wondered how Lynette's disappearance connected to Fremine's disappearance. We don't even know for sure yet. मुझे भी समझ नहीं आता. सस नहीं, बुरकाटी है. बुरकाटी क्या होता है? Clever? Someone, please help. He's sick. Whoa, are you okay? भाई सीजविन सस है, बहुत ज़्यादा सस है. These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being trusted. I am not sure how to feel about this. Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. कितनी क्यूट लग रही थी पहले ये. कितनी होलसम लग रही थी. Being able to read human expressions is quite the useful skill. और लेनी भाग रहा है. No use. We have to catch up to him. कैचअप तो मैं आराम से कर लूंगा. गायब कैसे हो गया? मुड़ते गायब हो गया. He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Wriothesley's office. राइडन के बाद क्या निकालोगे? फिर मैं देखूंगा. Then I'll look. Then I'll consider कि क्या निकालना है. बच्चे भगवान का रूप होते हैं आर्कॉन. ये बच्ची नहीं है. शी ससी बाका. टू मच ससनेस. और खासकर ऐसा कैरेक्टर मुझे और ज्यादा ससी लगता है जो बहुत ही अच्छा बन रहा है. खासकर सीजविन जैसी लॉली. मुबारक हो, चीची की स्टोरी क्वेस्ट आ रही है 4.2 में. क्या बात है. हम सब करेंगे, मिल के करेंगे. इसी का तो इंतजार था इतने दिनों से, चीची की स्टोरी क्वेस्ट का. फुरीना रीरन जल्दी होगा 4.6 में. ऐसा हो ही नहीं सकता. फुरीना का रीरन होने वाला है, वो भी 4 पैच के बाद. ये किसने बोला तुम्हें? सो यू कैन पुल फुरीना. Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister?
I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. तो यहाँ पर है वो? Stop joking around! Where did you take my siblings? Wait for a while, you'll see more such things. वही देख रहा हूँ. भैया 4-5 पैच के बाद ही होता है रीरन. कमाल है यार. I have also heard that your performances are quite the spectacle. नाहिदा भी ऐसे Miss आई थी. Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. सर किसी ने कहा था कि फुरीना कैन मैनिपुलेट ग्रेविटी. अब लीक देखा तो वो सर्कस वाली निकली. बट शी इज लाइक रियली गुड. शी इज रियली गुड. सर सारे आर्कॉन के फर्स्ट रीरन 3-4 पैचेस बाद ही रहते हैं. मैंने नोटिस नहीं किया यार. She'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No. He's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. Linny wants some of Riz. Okay, I want you to stop and count how many times it says T. अब तक तो एक ही बार सुना या 2 बार बोला इसने. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? राइजली सही है. राइजली को अपनी थोड़ी हद में रहना चाहिए. He is just a normal human with a vision. चाइल्ड और जो आर्लेचिनो है ना, इसका क्या कहते हैं, मिसल पाव बना देंगे 2 मिनट में. One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not? What do you really want? Lenny! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Okay. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So, where do you think he may be right now? He mentions tea so many times it made me sick for tea. अच्छा, इसलिए कह रहे हो. लास्ट के कुछ मिनट पूरी क्वेस्ट से अच्छे हैं. नो स्पॉयलर्स. ओके. मिसल पाव तो चाइल्ड अकेला बना देगा. दोनों साथ में मिलके इसकी दाबली बना. Wait, you can't mean you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linny is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. ये मेल कैरेक्टर्स कमर टेढ़ी करके क्यों चलते हैं? संडे स्ट्रीम रहती है. हाँ, यूजुअली संडे को स्ट्रीम रहती है. यूजुअली मैं हफ्ते में 7 दिन स्ट्रीम करता हूँ. Face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. ड्यूक लग तो स्ट्रॉन्ग रहा है. उसके किट के हिसाब से देखते हैं क्या सीन रहना है ट्रायल में. इन गेम तो ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ये कौन से गेम है, नेम बताना जरा. मैजिक चश्मा हो भाई. ये है पावर ऑफ फैंटेसी. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Sampo is here. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all of that changed. Mr. Linny, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremine is still slowly being pickled out there in the brine.
You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup of tea with me. हम कौन भाई? ये बैंक का नया अपडेट है. Poor Flamina is in water for 2 days. घुल गया होगा बेचारा. You want to see father? But why should she bother giving you an audience? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. तो बुला लेना. आर्लेचिनो तो पहले खुद कह रही थी जाने के लिए वहां पर. न्यूविलेट ने मना कर दिया. और न्यूविलेट भी मना करने वाला कौन होता है आर्लेचिनो को, जब उसका क्या कहते हैं, कोई लेना देना ही नहीं है फोर्ट्रेस ऑफ मैरोपीड के साथ. आर्लेचिनो स्टार्टिंग से कह रही थी जाने के लिए. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. रिजली की जैकेट एलान से इंस्पायर्ड है. नोटिस किया दोनों जैकेट स्लीव्स में हाथ नहीं डालते. TUF मैं तो वैलोरेंट समझ के स्ट्रीम देख रहा था. अरे भाई, प्रेमिनेट के हाथों में लाइन आ गई होगी पानी वाली. उसके हाथ सिकुड़ गए होंगे. Why did you think father Pramine sent us to freezing in handle the water. fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur Neuvillette and Lady Farina have already received many samples as gifts. Was this the extent of your master plan to get to father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. I want the handcuff behind Risley jacket. कौन सा handcuff? Handcuff. ओहो, handcuff क्या करोगे ईश्वरी? अकेले के लिए handcuff का क्या काम? You people really are difficult. मैं जरा खाना खा के आया. Okay भाई. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? आगन भाई, कल जिबू भाई ने जो स्ट्रीम की थी उसकी सबसे बेस्ट क्लिप दी. मैं करी ही देखना जरूर. अच्छा, मैं देखता हूँ. कहाँ शेयर की है? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. डिस्कॉर्ड में पर्सनल बोलो तो आपके सर्वर में करूं? नहीं, डिस्कॉर्ड में रखो. मेरे सर्वर में तो अभी इतना कोई क्या ही देखेगा. डालना है तो डाल सकते हो. शोकेस में डाल देना. Mr. Fremenet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. ड्यूक भी लाइक पिताजी को बुलाओ, अपने पापा को बुलाओ. I tried to sneak in a chamber with Risley. क्यों नहीं? I shouldn't ask father to do anything because of us. 6, 5. Wait, जब कैफेटेरिया जाओगे उधर दुकान वाले से बात करके रेसिपी क्या बेच रहा है देखना. ये दुनिया में ग्राइंड करने उतरे हम गेम है जहाँ एक कैरेक्टर के लिए भीख मांगनी पड़ती है. भीख नहीं मांगनी पड़ती है, कि कैरेक्टर के लिए मेहनत से सेव करना पड़ता है. Time's up. It really is a shame, Mr. Linney. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. Yeah, listen to the Traveler. If you can't talk to Linny, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found, Duke is a father of his own. पापा की बात होगी तो एक पापा दूसरे पापा से बात करना चाहता है. I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone,
What is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? भाई यार फिर से आ गया. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. Nope. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. We often see Miss Sijween observing the prisoners at work near the production zone. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. Who counts from 6 down? Apparently, Risley. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. The research notes said that the Melazine race perceives the world very differently from humans. ये कैसा है? As a result, the Melazines have also developed a sense of aesthetics that we often see Miss Sijween observing the this one. Under what circumstances does the strange meat appear? I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value. The research notes said that the Melazine race perceives the world very differently from humans. As a result, according to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed... Hypothesis incorrect. दो incorrect हैं. Okay. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour. Okay. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't... The research notes said that the Melazine race... According to Collins, the Pancration tournament only took... The research notes said that the Choose one win on any character or your favorite stats and substat artifacts. मतलब? At least give the poor baby till 10 to decide between lives of his siblings or your PTM with his papa. So that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. At first we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared, but in reality, they were all prepared by Sijween, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. क्या लिखा? इतना चेस खेलता टाइम नहीं सोचना पड़ता जितना यहाँ सोचना पड़ता है. ओह. लेडीज एंड जेंटलमैन गलत बोला इसने. लॉली एंड जेंटलमैन बोलना था. लॉली एंड जेंटलमैन क्यों? लेडीज भी तो खड़ी है ना. What do you want in Genshin? सोचने दो. I want a lot of pulls, lot of primos. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijween visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Paimon taking all credit for Traveler's efforts. वो तो पुरानी बात हो गई. Sijween has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. However, कौन सी लेडी है? लिनेट है ना यहाँ पे कहीं चाय पी रही है. बोल तो रहा इसलिए. unfortunately, Melazines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. Are we on the right track? Paimon is Lolly Pro Max. Not bad. You've uncovered Sijween's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her efforts have not gone unacknowledged. All right, now for my next question. तो Sijween क्या कहते हैं? अच्छी है या बुरी है? मुझे समझ में नहीं आया. There are also some hidden rules in the Pancration ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? वैसे पाइमन शुरू में पानी में क्या कर रही थी? वो उड़ती रहती है ना. बहुत गहरे सवाल पूछ रहे हो भाई तुम. इनके जवाब ऐसे कैसे दूं तुमको?
Who sent the package containing the strange blood-colored fluid? I've been told that the infirmary is always empty for the Fonta's internal report suggests that they're starting a new... This is a new blood-colored fluid. Fonta ka We naya. often see Miss Sijuin observing the Fonta promoter has been struggling because the research notes said that the Melazine race perceives, according to Collins, the तीनों incorrect. Wow. I've been told that the infirmary is always empty. We often see Miss Sijuin observing the Fonta promoter has been struggling. The research notes said that the Melazine race perceives the world. According to Collins, the Pancration tournament. I've been told that the infirmary is. Fonta's internal report suggests that there's. We often see Miss Sijuin observing the. Fonta's internal report तीनों गलत है यार, क्या चक्कर है ये? I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. Fonta's internal report suggests the Fonta promoter has been struggling. एक गलत है खाली. We often see Miss C. The research notes said that the Melazine race perceives the world very differently from humans. As a result, the Melazines have also developed a sense of aesthetics that appears rather strange. Ladies and gentlemen, you can leave. भूल गए क्या? Arkhon भाई showcase में clip भेजिए, देखना जरूर. Okay जी. You're getting the order wrong. अच्छा, order मुझे write करना है. According to Collins, Okay. Order से भी ध्यान देना होता है. Paimon gets this rule too now, so there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the Pancration ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange blood-colored liquid. People get scared when they see Guys, it like दबा देना किसने नहीं किया अब तक तो. because they've begun to associate it with the missing boxer. But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fonta trial product. A blood-red Ad आया अभी. drink. It's no wonder even Fonta's क्या own बात कर रहे हो? staff were questioning the company's decision making. Bro, you following story quest still failing in hypothesis. हमारे क्या होगा क्या पता. भाई यही तो बात है. पूरा देखना पड़ता है. Backlash from its own staff decided to try to trial the product on a smaller scale to see how it might be received by customers. मेरा बस order ही wrong हुआ, लेकिन चीजें तो मैंने correct select किए थे. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fonta product here. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match were selected to receive the drinks. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Poor traveler got sick just sniffing it. Although, based on your description, that Fonta promoter is a bit too careless with his words, I may just reconsider my collaboration with the company. फोटो देखा था आपने चीबी वाला. ड्यूक भी डायोना से हेयर कट करवाने जाता है. Alright. डायोना हेयर कट कब से करने लगे? What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? अब आई सन्नाटे वाली बात. Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought is, you'll pay for this! Oh, come on. ये क्या हुआ? गोली मारी किसने इसको? Are you alright? Oh, close one. I owe you, Sijuin. That was a fantastic shot. Sijuin! It was nothing, Your Grace. Sijuin? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. What? Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. Bro. When
Monsieur Nervulette asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us? But I really am just doing what Monsieur Nervulette told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. नींद के तो कुछ ट्रैंकुलाइजर टाइप का मारा है इसने इसको. His Grace knows it too, right? Your Grace? Mind proving my innocence to them? कहीं इनोसेंट नहीं है तू, चुप रह. My dear Sijuin, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. ट्रैंकुलाइजर था ना. डायन और केरारा की शॉप है जिसमें कचिंग दिया ड्यूक हेयरकट कराने जाते हैं. तुम कौन से ऑल्टरनेट यूनिवर्स की बातें कर रहे हो भाई पम? What are you talking about? What time? Take me if you want. Let them go. How touching. Can you just give me one more minute? Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. I'll go get a cup of tea. Miss Sijuin, I leave Miss Lynette in your care. You... What are you doing? I believe I hear footsteps. आ गई लिनेट. लिनेट आ गई. Some space, please. कोई भी कभी भी कैसे भी घुसे जा रहा है स्टोरी के अंदर. Ah, Miss Clarande. My door. फ्रेमिनेट को लेकर आइए ये. Freminet. What's going on? What is Clarande doing here? Work. Work. I'm sorry about shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime, though. मम्मी आ गई. What happened to Freminet? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like... A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. ओ डाइल्यूटेड फॉर्म में क्यों नहीं तो घुल जाता अब तक तो ये. What did you say? Please, 31 likes by the way. अरे thank you. I'll need to give Mr. Freminet a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clarande while you get Freminet to where he needs to be. Everything else can wait. What the hell? What's that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sijuin may have been forced to shoot Mr. Linney again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. Oh? I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time, well, you can see how that boy is doing. तो मतलब कि फॉन्टेन का जो चारों तरफ पानी है उसके अंदर प्राइमोर्डियल सी वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है. Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Locking the door was necessary. जल्दी वहां से हटो. I don't think we could have saved two. पूरे फॉन्टेन को बोलना पड़ेगा जल्दी वहां से हटो. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work though. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. It's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? Not क्या particularly. है इसके चाय के If साथ? you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Might as well then, I suppose. Not Actually, Fontaine, do you have a Uber the towel? prison. I would like to dry my hair. कैमरामैन जल्दी से क्लोरीन पर जूम करो. One of the best cut scenes coming. Ooh, okay. I'm excited. किससे बात करनी है? लिनी से? How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater.
Still, his condition is not critical. प्रेमिने को देखो, शायद DUI में सांप घुस गया होगा. DUI में सांप घुस गया होगा. DUI क्या होता है? Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now and move him to the infirmary once he's recovered a bit more. Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however. Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? अच्छा, DUI नहीं, दुई क्या होता है भाई? Please, look after Mr. Fremine for the moment. मैंने तो पहली बार सुना है Some वर्ड ये. medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I actually made some snacks and tea for her. कोई बात नहीं, इग्नोर करो. चलो. अब किससे बात करनी है? Linny, are you okay? I'll be fine. They're all here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look alright. Do is but oh अच्छा. My hands गलत and सोच feet वाले. are still a bit weak. कौन गलत but सोच वाले? हम? That's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. I'm back, everyone. आगे लिनेट. Lenny! Oh, Traveler, Paimon, you're here too. Fremine? He'll be fine. But for now, please help me lift him up. दुई मतलब दुकान. मुझे भी नहीं पता था इसका मतलब. उल्ट्रा ने बताया था कुछ दिन पहले. His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? On it. Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? The Duke and Clarande are gone. They probably went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Clarande will need a break, since she only just returned from rescuing Fremine out of the sea. Okay, let's go. जल्दी से कहाँ जाना है? अच्छा, बाहर. The wind rises. ड्यूक कहाँ लेके गया क्लोरीन को? टी के बहाने चाय पिलाने लेकर गया होगा यार. तुम्हारी सोच ही गलत है. Squall and fury. गाइस क्लोरीन और ड्यूक का कुछ नहीं चल रहा. क्लोरीन और नाविया का चल रहा है. ईश्वरी एक कदम और आगे बढ़ गई. ड्यूक साला कितनी चाय पिएगा? इंडिया में होता तो ताज का इसमें ऐड करने को मिल जाता. He's awake. Lenny. कट सीन हुआ. फ्लक्सी भाई अभी नहीं हुआ. वेलकम टू द स्ट्रीम. लाइक दबा दो. The infirmary at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine, and you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. They went on a dinner date. Tea date is nothing compared. The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, we know, we know. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. Pipes.
प्राइमोर्डियल सी वाटर आ कहाँ से रहा है? Right, कहीं स्टोर the हुआ होगा ना? pipes. It's all coming back to me now. Fluxy, why are you even here? Because he is always welcome here. Really average uncle on Nukkad. चाय पीने वाला. ईश्वरी पर्ची, आर यू स्वप्निल पर्ची? क्योंकि स्वैगर की स्ट्रीम पे आया है, जस्ट आस्किंग. ना ना ना, ये दे आर बोथ डिफरेंट. I'm in. मुझे भी ऐसे लगा था. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. अच्छा, that's your brother. It No looks shit. abandoned. मैंने एक बार बोला था, पता है स्वप्निल को मैंने एक बार बोला था कि there is a girl that comes on my stream and her name is Ishwari and he did not say anything. Where could Master Child be? अबे हम फ्रेमिना कैसे बन गए? हम फ्रेमिना कैसे बन गए? रॉयल ग्रेट सोर्ड के साथ, क्या बात है भाई. दिस आर्कन क्वेस्ट इज जोड़ यार. अब तक तो इट लुक लाइक अ चोर, बट हाँ इट इज गुड. This mechanism looks like it's been tampered with. ईश्वरी देख लो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारा वो ही नहीं दिया, इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया. अरे मैंने सुबह ही पी लिया एंड रात को भी पिएगा. अभी आते ही बोला था कि आई माइट बी इन स्ट्रीम टुमारो टू. वो तो ठीक है, बट आई डिड नॉट नो कि भाई का नाम ये था, स्वप्निल है. मैं बता तो रहा हूँ, आई सॉ हिम ऑन अ स्ट्रीम एंड आई टोल्ड हिम कि यार पर्चे नाम सेम है. मेरी स्ट्रीम पर एक लड़की आती है, हर नेम इज ऑल्सो पर्चे. ही डिड नॉट से कि ओ दैट्स माई सिस्टर. बताओ. इट गॉट रियली गुड ओवर टाइम. हाँ बीच में तो इट वॉज लाइक रियली बिग चोर ये वाली क्वेस्ट, बट ठीक है. कुछ करना है इधर स्टार्ट या इधर करना है? चलो ऊपर लेकर आओ. फिर इसे रोटेट करो. Told you name and all and you forgot. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Okay, अब क्या करूं ये मैं? Adjust the rotary plate. तो मुझे पहले इसको नीचे लेके जाना होगा, रोटेट करना होगा. उसके बाद मुझे दोबारा इसको ऊपर करना होगा. अरे What the hell? मैं गलत आ गया क्या? अरे बाप रे, मैं अटक गया. बाय बाय. द होल ऐसे करोगे अब हमसे? अरे पढ़ा नहीं यार. ऊपर से रोटेट करना है. जी वेल प्लेड. रोटेट तो ऊपर से हो जाता, गलत आ गए. चलो कोई नहीं, ऊपर से कर लेते हैं. अभी मैं यहाँ पर हूँ, सो आई हैव टू रोटेट इट फ्रॉम वेयर? अच्छा ऊपर जाके रोटेट करूँ पहले, उसके बाद इसको लेकर आऊँ. तो यहाँ जाने से पहले मुझे उस वाले पे क्लिक करना था. अब ऊपर लेकर आना है इसको. समझ गया यार, मैं इतना ही बेवकूफ़ भी नहीं हूँ. गाइस लाइक दबा देना किसी ने नहीं किया अब तक तो. चलो हम आ गए. वेलकम बैक टू टीच गेम्स. ऊपर से ही उसको नीचे करना है, देन रोटेट. हाँ डन. लाइक करना था क्या? कर दो भाई, तुम्हारी मर्जी है. ये हमारे साथ भी होता है चिचा. हम लोग हमें भी ऐसा ही समझते हैं अंदर से. देख लो यार, स्ट्रीमर्स को कोई ठीक नहीं समझता.
Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. एक्ट 3 नियर टू एंड है, ये एक्ट 4 चल रहा है भाई. दिस इज एक्ट 4. चलो ये पानी में डुबकी मारो. ये चमकीली चीज क्या है फ्रेमिने का राइट में? The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going. Oh, there are traces here too. I need to keep going. Huh? The traces are gone, but I don't see where he could have gone from here. ब्रिजली मेरे को क्वेस्ट के बाद और कूल लगने लगा. बंदा माइक टाइसन है. ये एक्ट 4 है. हाँ, वो आपका स्ट्रिंग है जो उसे यूज करते हो अंडर वाटर. अच्छा, My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? तेरा डाइव सूट कहाँ है भाई? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. अच्छा, न्यूमा पावर है उसकी. Back right Okay. now. I should still be able to make it. भाई पूरा का पूरा पर्पल हो गया. ये ग्लव्स ही पहनता है. सारे के सारे हाइड्रो कैरेक्टर्स ग्लव्स पहनते हैं. सारे हाइड्रो कैरेक्टर्स सब ग्लव्स पहनते हैं, पता नहीं क्यों. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. गयो प्रेमी ने तो गयो. He has his helmet on his back. अब बताओ, हेलमेट पहन के करता है तो ये प्राइमोर्डियल वाटर नहीं जाता ना मुंह के अंदर. भैया लाइन आ जाती है ना हाथों पे पानी से, इसलिए पूछना पड़ता है. By the way, मेरे समन्स हद से ज्यादा अच्छे गए. किसके समन्स? यहाँ पे न्यूविलेट के? You had no idea where Master Child could have gone, but there was also no obvious place for him to have disappeared to. 4 पिटी पे न्यूविलेट आ गया, क्या बात है? That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that, and you know the rest. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clarande, you say? I must go thank her in person. You're still too weak for Monet. मेरे को कल चीची मिली 74 पिटी में. लकी. एंड होमलेस आ गया, ये अच्छा नहीं था, बट आई विल टेक इट. कौन होमलेस? Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. उसके पहले लिनी बैनर पे 4 पिटी पे दया निकली, उसका 4 पिटी पे न्यू. क्या बात है यार, फ्लक्सी तो कुछ ज़्यादा रिडिकुलसली गुड पुल्स यार. मेरा राइडन के पुल्स ऐसे निकल जाए तो मज़ा ही आ जाए. Guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? होमा उसके पहले न्यू होमा निकला तुम्हारा. होमा, स्टाफ ऑफ होमा, कसम से. स्टाफ ऑफ होमा कितने पिटी पे मिला? ये 40 पिटी है और गारंटीड भी हो अर्ली. आर्कन सर एवर थॉट ऑफ बीइंग एन एडिटर ऑन होयो विकी? ऑन होयो विकी? ना यार, इतना टाइम नहीं है. About that. He'll be able to explain better than me. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Liddy? भगवान हमें नहीं देने वाला ऐसे. लक्सी यार तुमसे पुल करा लूंगा फिर तो मैं अपने. हैं
No, please go on without me. I don't want to leave just yet. पर मुझे लगता है तुम्हारा सारा लग तुम्हारे पुल्स पे चला गया, मेरे पे नहीं आएगा, तो मुझे अपना ही पुल करना पड़ेगा खुद। 65 पे होमा मिल गया, फिर भी नॉट बैड, नॉट बैड। Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. Then let's just sit together for a while. In that case, I'll leave the infirmary यार, to मैं ही you. कर लूँगा। The traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Thank you. ओके, अब क्या करना है? सीक्रेट कीपर्स इन फॉरबिडन जोन्स, गो टू द ड्यूक्स ऑफिस। गाइस, क्या लगता है कितनी रिक्वेस्ट रह गई है? क्वेस्ट कितनी रह गई है इस पॉइंट पे? जीजीवीपी हो जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, बस अपना आशीर्वाद दे देना आके। थर्टी मिनट्स एट मैक्स। चलो फिर तो पूरी करके रखता हूँ। ओके, लेनी से बात करते हैं, क्या चल रहा है? I'm also really sorry, Lenny. Don't say that. If I was stronger. No, how can you Huh? I'm sorry. What I'm here... Yeah, that's... Lenny, we understand that you're worried about us, but... Yeah. चलो, not important dialogue. Let's go. Too slow. The wind rises. जल्दी 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 जल्दी। Behold. राइजली के ऑफिस जाना है। कूल। 90% डन्स। मेरे को राइडन का WP चाहिए, वेपन चाहिए। अरे मुझे भी चाहिए, बट आई नीड C2 राइडन फर्स्ट। लक्ष्य स्काईवर्ड वेपन अच्छा है बहुत, मुझे भी स्काईवर्ड स्पाइन मिला था। मुझे याद नहीं मैं किसके वेपन के लिए पुल कर रहा था, पर मुझे स्काईवर्ड स्पाइन मिला था और वही यूज कर रहा हूँ राइडन पे मैं तब से। एक बार एनगल्फिंग आ जाएगा तो मुझे थोड़ा सा वो होते हैं ना आर्टिफैक्ट्स इधर उधर हिलाने पड़ेंगे, बट माय राइडन विल बी गुड। एक्सक्यूज मी। I take it Mr. Fremonet's condition has stabilized? Of course! I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Sijuin? I wanted to check up on Miss Claran. How are you feeling? मैं जा रहा न्यू की स्टोरी क्वेस्ट करने, पुल्स जमा करने पड़ेंगे फिर से। ओ करो करो करो, मेरा आज ही पूरा हो जाएगा। मैं न्यू की स्टोरी क्वेस्ट कल निपटा दूंगा। Mostly fine, I think. मेरे पे आज तक 3 साल हो गए, आज तक 5 स्टार क्लेमोर नहीं मिला। मेरे पास भी एक भी 5 स्टार क्लेमोर नहीं है। सेम सेम सेम। आज तक मेरे पास भी एक भी 5 स्टार क्लेमोर नहीं है। इमेजिन। एक सेकंड गाइस बस। ये हल साइकोपैथ है बच्ची। कौन सी बच्ची? सीजविन ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है यार। आई ऑल्सो फील सीजविन, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसका ना बड़ा ही एटीट्यूड इसका बहुत अलग है, बहुत अलग है। राइडन के वेपन के बाद मुझे भी गॉबलेट चेंज करना पड़ेगा और मेरे पास ऑलरेडी है इलेक्ट्रो गॉबलेट। मेरे पास इलेक्ट्रो गॉबलेट नहीं है। राइडन को मैंने अटैक गॉबलेट दिया है, मुझे अब तक कोई भी ढंग का इलेक्ट्रो गॉबलेट नहीं मिला। एस रीना लास्ट चैट में राइडन के वेपन के बाद वो आर्कॉन भैया रेड हॉर्न क्या है फिर? अरे हाँ सॉरी, एक ही है मेरे पास, एक ही है सॉरी, एक है रेड हॉर्न है मेरे पास। फाइनली समवन हु थिंक्स शी इज आल्सो साइको। हाँ बट शी इज वेरी सस। जब इसका सीन आया था ना, तब इसका सीन देख के मुझे लगा था कि स्माइल क्यों कर रही है। शी इज अ कैनिबल। ईश्वर, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। How long is this goddamn quest? भाई लोगों के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स की और है। Quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right.
Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now then. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Please enlighten us as much as you'd like. वो वेपन है जिसपे मैं 5 बार हारा हूं रेड हॉर्न पे, 5 बार एक ही बैनर के ऊपर 5 बार तुम हार गए, मैं मान नहीं सकता. 6 hours for fate, नहीं भाई, और 1 hour या उससे ज्यादा का बचा है. नहीं, लोग कह रहे हैं 30 minutes का बचा हुआ है. Best cutscene coming, bro. Just wait. Another brother found. Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Like 3 banners. 3 banner के ऊपर. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. 2 बार हारे then third के लिए पुल खत्म. Sent to the fortress by the knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. 2 बार हारा then third के लिए पुल्स खत्म, जो guaranteed होता है. 2 बार हारा. अच्छा, ओके. मतलब कि तुम्हारे बहुत गंदे पुल्स गए. गाइस एक मिनट जरा. ये 3 बार हो चुका है. क्या बात है. If you run through it, not slipping dialogue 30-40 minute max. Didn't know what they were trying to do? हाँ तो फिर तो ठीक है ना. They came मैं dialogue here skip with क्यों कर रहा हूँ? ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Of course, it's inevitable that the knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went. So I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Lenny's group would just do your work for you? You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremine has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. I have 7 5-star catalyst. Wow. First Shao tried to sacrifice himself in underground chasm. Second, one wanderer gets his vision. ये मेरा personal fave cut scene है. अच्छा. The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. My favorite is Raiden trying to kill Traveler. यार एक काम अपने को ना एक ना वो बनानी चाहिए. We should make a tier list of cutscenes. Are the rumors true that you're also a former criminal? Bro just dropped 2 spoilers casually. हाँ भाई, अरे भाइयों यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने भी गेम स्टार्ट किया, तुम लोग स्पॉइलर दे रहे हो उनको. Not everyone is a veteran. Why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Oh, right. Paimon wanted to ask. भाई, कब ऐसा वीडियो अपलोड करोगे स्पेंडिंग 2k रेजिन्स ऑन अ कैरेक्टर? स्पेंडिंग 2k रेजिन्स ऑन, मेरे पास इतने रेजिन्स कभी इकट्ठे ही नहीं हुए भाई, क्या करूं? आई थिंक इट ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो क्या हुआ, हम अपनी बनाएंगे. हमारा खुद का भी तो वो होता है ना एक our own क्या कहते हैं वर्जन, my own thinking. Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremine was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving.
Had conditions not been as hostile as they were, Paimon got he 0 probably chills. would have Hope you found are the having missing 50 on harbinger Grizzly. already. अगर मेरे पास आइडिया है जब तुम C2 करोगे राइडन तब क्या होगा? राइडन C2 करूंगा तब क्या होगा? दो वे बिल्डिंग अ कैरेक्टर फॉर 20 डेज ऐसा वीडियो। हाँ आइडिया अच्छा है बट मेरे पास इस टाइम कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं जिसे मैं बिल्ड करना चाहूँ क्योंकि मेरे पास वो भी नहीं रहते, सेव्ड कंडेंस रेजिन भी नहीं रहता। That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant? Yes. Follow me. ये फोरबिडन जोन दिखाने वाले हमको। Every sub is equal to 10 पुल। इतने तो पुल्स भी नहीं मेरे पास भाई। तुम अमीरों वाले मुझे वीडियो आइडिया दे रहे हो विवेक, जो अमीरों को वीडियो आइडिया होते हैं। मेरे अकाउंट पे मेरे कैरेक्टर्स बिल्ड करो। काहे नहीं, काहे नहीं। Quit following me. कितना कंडेंस रेजिन है तुम्हारे पास? There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. फाइव ही तो रख सकते हैं कंडेंस रेजिन, नॉट मच। मतलब कि लेकिन रेजिन और भी तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास। वो अरे उसकी बात कर रहा हूँ, ये जो कि फ्रेजाइल रेजिन नहीं होता, वो तो बहुत सारा हो सकता है। यार तुम एक काम किया करो, तुम लोगों को अगर कोई वीडियो आइडिया दिमाग में आए ना जो मेरे दिमाग में ना आ रहा हो तो मुझे डिस्कॉर्ड पर डीएम कर दिया करो। आई सी मैं उस पर क्या बना सकता हूँ, शॉर्ट बना सकता हूँ या पूरा प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ। फ्रेजाइल तो 57 है, अरे बाप रे, फ्रेजाइल 57 है, मतलब कि तुम्हारे उस पर बनाए जा सकते हैं। आशी तो सर रिव्यू करोगे ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल रिव्यू करूंगा, जैसे ही क्वेस्ट ओवर होगी सबसे पहले तुम्हारा रिव्यू करूंगा। और यार डेली आ जाया करो, क्या तुम मज़े आते हैं, चैट चूट किया करो यार। डिस्कॉर्ड का लिंक जो है चैट में पिन किया हुआ है मैंने, और साथ ही साथ मैंने उसमें भी किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और बाय द वे आज जो पोल चल रहा है उस पोल के क्या हाल चाल है? पोल तो देखा ही नहीं मैंने इतनी देर से, पोल तो चेक करूं। देयर आर 37 वोट्स, 78% लोगों को वेलकिन मून चाहिए, 22% जिनको स्टार रेल एक्सप्रेस में इंटरेस्ट है। ओके चलो। Wait, is there a secret mechanism or whoa? भाई राइडन C2 में 10, 15, 10 पुल हो जा ही जाएंगे, बिना उनके कैसे करोगे C2? नहीं हो जाएंगे, मेरे पास क्या कहते हैं इतने पुल्स इकट्ठे हो जाएंगे। मेरा AR38 वाला दूसरा अकाउंट है, उसमें एक फ्रेजाइल। तुम एक काम करो, जिसको भी अगर ये करवाना है ना, DM मी कि तुम्हारे अकाउंट में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. बैटल पास चाहिए, बैटल पास मिलेगा 1000 सब्सक्राइबर्स पे। What a huge door! 1000 सब्सक्राइबर्स पे वेलकिन मून प्लस बैटल पास, या फिर एक्सप्रेस पास स्टार रेल में, और या और बैटल पास, दोनों का इकट्ठे गिव अवे होगा 1000 सब्सक्राइबर्स पे। चलो मैं चला। ओके विवेक, थोड़ी देर रुक जाते तो तुम्हें वो मिल जा, देखने को मिल जाता कट सीन। लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा है। Such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. मेरे अकाउंट में वेलकिन चाहिए भैया, सुपर इंटरेस्टिंग वॉच। Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself Okay. before deciding whether or not to tell them. 10-15 मिनट में आ जाओगे? चलो ठीक है।
तो हम फाइनली एक फॉरबिडन जोन के अंदर आ गए हैं। कोई चेस्ट वगैरह है यहाँ पे? ना, देयर इज नो चेस्ट। So there's a switch on the side. किसी को पता है कि वराइजली आर्कन क्वेस्ट खत्म होने के बाद कहाँ होता है? भाई पता नहीं। Stand back. विवेक भाई उतनी देर में खत्म हो जाएगा। चलो विवेक की किस्मत, वो आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। गाइज किसी ने लाइक नहीं किया हो तो दबा देना, ठोक दो लाइक महाकाल के नाम पे। Go on, have a look. मैंने भी नोटिस किया कि मेरे पास बाकी कैरेक्टर्स है ही नहीं, सिर्फ ट्रैवलर है। I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. Forbidden zone in Risley's pants. Har Har Mahadev. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. ये needle क्या primordial sea water की concentration track कर रही है कि कितनी हो रही है? Normally I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Concentration ना, मैंने सही guess किया. Later on, a few more possibilities occurred Looks like to me, Scaramouche such as boss a area. potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. आशी तो कह रहा है चाइल्ड डूब गया। कट सीन जल्दी आ जाओ इसे यार, लोग बड़ी हाइप क्रिएट कर रहे हैं कट सीन को लेके, क्या बात है? मतलब काफी अच्छा कट सीन होने वाला है। देव भाई वेलकम वेलकम, बहुत लेट हो गए पर वेलकम। Over the past few days, the needle has moved again. With that and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. सही गेस किया मैंने। और एंड द फैक्ट कि किसी ने ये ट्रैकर बनाया हुआ है, इसका मतलब किसी ने कभी ना कभी तो ये जरूर एक्सपेक्ट किया होगा कि फॉन्टेन के वाटर्स में प्राइमोर्डियल सी लेवल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, विच मीन्स कि जो वो थी यार वो जो थी भविष्यवाणी जो थी कि फॉन्टेन के सारे लोग डूब जाएंगे, घुल जाएंगे प्राइमोर्डियल वाटर में और खाली फुरीना बचेगी, ये उससे रिलेटेड है। The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. अरे वो थोड़ा फुरीना के लिए तैयारी कर रहा था, उसी में लगा था। ओके देव भाई कोई बात नहीं, लाइक दबा दो जल्दी से महाकाल का नाम लेके। Yes, that's very likely. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be. वो ऑलरेडी एक बार हो चुका था, ये सेकंड टाइम है इन थ्योरी। फुरीना इज सच अ क्लाउन दो। या शी इज। Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. Okay. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. Okay. फुरीना का गेम प्ले देखा कितना गंदा है भाई, गंदा भले हो बट इट्स वेरी इफेक्टिव एट अप्लाइंग हाइड्रो। If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. जब फर्स्ट बार हुआ तो उसके बाद ये गेट बनाया था। ओह Yeah, you know what the legends say. If The this way place prophecy के falls, बारे then में। everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. Ooh. Too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the primordial sea? Who built this place anyway?
Off-field Hydro applier meta. Yes. Yes. She is going to be very strong. Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. Rishu, welcome. Yo, what's up? Because Furina is helpless child who is depressed actually because she is powerless and can't do anything. That's why वो clown जैसे act करती है because to remember her past. Fluxy bhai with a very good theory. Newlet the real Hydro Archon. There's no single Just school founder se bhi of aaye. the Okay. Fortress of Parapet in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon, Egeria, ruled the land, Egeria all naam hai convicted previous criminals Hydro from Archon ka. Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. तो पुराने Hydro Archon का नाम था Egeria. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. A lot of people have speculation that Furina isn't even a real Archon. मुझे ऐसा लगता है कि Furina is the real Archon, but हुआ क्या? ये 3 बहनें थी. एक थी Egeria, दूसरी थी Furina और तीसरी एक और बहन है जो ऑरेट्रीज के अंदर इसकी कॉन्शियसनेस है. Furina जो है वो एक Archon बनी हुई है और जो पहली बहन थी जो Egeria थी सबसे बड़ी बहन वो मर गई. उसका टाइटल पास ऑन हो गया Furina के और Furina ने अपनी तीसरी बहन की कॉन्शियसनेस को ऑरेट्रीज में डाल दिया. तो Furina इज द Archon, ये तो नो डाउट है. भाई अभी तक येलान का वॉइस लाइन दिमाग से नहीं जा रहा. कौन सा गुड नाइट वाला? मैडम पिंग आते आते ओशिनेट के बारे में ही पता चल गया क्योंकि हाइड्रो आर्कॉन से रिलेटेड हैं. आई एम स्टिल मैड कि हाइड्रो नेशन की आर्कॉन इतनी बेकार बनाई. एक्सपेक्टेड अ वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग आर्कॉन सिंस नेशन ऑफ जस्टिस. हाँ, इट वॉज लाइक लिटरली अ वेरी डिफरेंट थिंग than what I expected. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. फ्लक्सी को लीसा का गुड नाइट वॉइस लाइन सुना दो इसी बात पे. Finished fortress to their successors. बट फ्लक्सी भाई को तो येलान की वॉइस लाइन नहीं जा रही गुड नाइट वाली दिमाग से. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. और पुरानी हाइड्रो आर्कॉन ने बोला गो गार्ड माय सीक्रेट. तो प्राइमोर्डियल सी वाटर जो है हाइड्रो पुराने हाइड्रो आर्कॉन का बनाया हुआ है. Who knows? And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. पहले बार तो हर रीजन में सस्पेंस होता था कि आर्कॉन से मिलेंगे और यहाँ आर्कॉन गेट पे रिसीव करने आ गई. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. वो लोग only speculate कर रहे cause एक character कुछ बोलता which is a speculation on its own in a game. देखो, until and unless something appears in game, everything is a speculation. Everything. After many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live Skip out their some days in dialogues, the man. fortress. No, bro. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. अगर गेट फेल होने की बात है गेट के ऊपर ईंटें रख दो बहुत सारी ताकि प्रेशर बना रहेगा. To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. गेट के ऊपर ईंटें छोड़ो, गेट के ऊपर यूला आलती पालती मार के बैठ जाए ना, टांगे क्रॉस करके बैठ जाए तो गेट नहीं खुलेगा. Prophecies are troublesome things.
Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. She's the Archon cuz न्यू खुद बोला ये बात लोग भूल रहे हैं एग्जैक्टली फैक्ट्स यूला थिक मैं कह रहा हूँ यूला अगर बैठ के इस गेट के ऊपर ना फिर किसी भी प्रेशर से गेट नहीं खुलेगा ये Let's go somewhere else. I want to show you something. और भी कुछ रह गया दिखाने के लिए गेट के पीछे एक और गेट बना दो फिर क्या फायदा हुआ वो गेट भी टूट जाएगा एक टूट गया दूसरा टूट जाएगा Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone! Huh? Lorvine and Jurier? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. You get a good idea about how Archons were created by the end of this quest. Ooh. मैं आता हूँ 5 मिनट में ओके फ्लक्सी What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? जोंगलिक बोलो एजदहा बिठा देगा गेट पे The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. How about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? He's the one who blew the whole institute sky high. Oh. Everyone knew he was a bit crooked in the head, but you're not local, so I guess it's possible for you not to have heard of him. NPC love story. Why is this relationship so relevant to the quest? I don't know. Edwin's main areas of research were archium and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the fortress of Meripede? Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. What? ये कैसा solution है? ये कैसा American solution है कि बम से उड़ा दो? फिर तो जो पानी है वो भी तो बाहर निकलेगा ही ना? Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? Was that really necessary? Everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? क्या हो रहा है? What is happening? What the hell is happening? Life of Winners, welcome back, भाई. तू कह रहा मेरी लव स्टोरी है unlike you खुद पे. मैं बोलेगा तो रेसिस्ट हो जाएगा. बोल दो. In a relationship with this man. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. I have my own struggling to success story. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool. लोग आज समझ जाओ जिसका दिमाग मेरे जैसा है. You are the only one of a kind, bro. Well, let's spice it up a bit. And here you go. बोलो NPC की लव स्टोरी चल रही है और हम अभी भी सिंगल हैं. What a huge What the hell is this? This is also a production zone that Paimon has never seen before. What's going on? ये तो है totally unexpected. What the hell? How much do you know about Fontainian history? Nothing. Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. Okay, इतना तो मैंने सुना है. मैं कुछ बोलूँगा तो येलो डॉलर आ जाएगा वाइटी स्टूडियो में. नहीं भाई यहाँ नहीं करना वो काम. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. Okay. नोवा शिप ऐसा कुछ था. मैं अपनी जिंदगी में एक बार पढ़ा था. अच्छा, नोवा's ship. He called his nation Lemuria,
and use the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. Okay. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? ब्लैक पर्ल तो उसकी बात कर रहे हो तुम, असैसिन्स क्रीड या किसी और की? अच्छा, जहाज का नाम भी ब्लैक पर्ल था। ओह, ब्लैक उसकी बात कर रहे हो क्या यार, फिल्म की? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontainians need something to hold Pirates on of the to Caribbean. cope with the impending disaster. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. तो ये जो क्या कहते हैं शिप बना रहा है, इस शिप के अंदर क्या सारे के सारे फॉन्टेन को भरना चाहता है ये, या खाली फोर्ट्रेस ऑफ मैरोपीड के लोगों को? क्योंकि फायदा क्या हुआ अगर ये लोग बच गए और बाकी सब लोग डूब गए? चैट मिस भाई, कौन सी चैट मिस हो गई? 1500 की गेम है, यही तुमने बोला। और क्या तुमने बोला? 1500 की गेम है, और तो कोई मैसेज मुझे नजर नहीं आ रहा। फॉन्टेन का क्लाइमैक्स मस्त होगा ये सबको। अच्छा, इतने बड़े शिप में सारा फॉन्टेन आ जाएगा? As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? ये शिप नहीं डूबेगा, शिप तो तैरेगा ना ऊपर। Seems like you're good. Come on, I'll take you back. Okay, now this story makes a bit of a sense. कि प्राइमोर्डियल वाटर आने वाला है और राइजली जो है उसने चार्ज लिया कि मैं किसी को डूबने नहीं दूंगा, किसी को डिसॉल्व नहीं होने दूंगा वाटर में। सो लेट मी क्रिएट अ शिप। सो इट्स लाइक नोआज आर्क। चाइल्ड डूब गया। चाइल्ड कहाँ से डूब गया भाई? भी अब तक चाइल्ड की बात किसने की नहीं। वो कहाँ गया? Thank you so John much. Olson, inspired by story of Noah. Exactly, loosely inspired by story of Noah, because water will engulf all in the prophecy. So he's trying to build a ship so nobody will drown. See, a billion IQ move. No worries, but don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. Last में you'll see what happens to child in a cutscene. I hope, क्योंकि नहीं तो फिर तो point in रहेगा ना। I look forward to what cutscene happens आया? next. अभी नहीं आया। अभी नहीं आया, आने वाला है। Guys, क्या लगता है cutscene अब कितनी देर में आने वाला है? Squall Fury. Quit following me. डोंट हाइप अप द सीन गाइज। अब तो ऑलरेडी कर दिया ऐश्वर्या, अब क्या कह रही हो? मैं बोला था बंदा क्वेस्ट के बाद मेरे को 200% चाहिए इन माई अकाउंट। इट्स डिफरेंट व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट। आई नो, बट क्या करूँ मैं, कह के थक गया यहाँ पे। लोगों से लोग मानते ही नहीं है। पीपल स्टार्ट हाइपिंग अप सर्टेन थिंग्स एंड व्हेन दोस थिंग्स हैपन ना, फिर मजा नहीं आता। Welcome back. Do you want a cup of tea? ये तीनों अब तक इसी बिस्तर पे बैठे हुए हैं। Can you be so much like Risley, always drinking tea? Huh. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. 15 से 20 मिनट। ओके। ए सरीना, तेरी सेटिंग की बात चल रही है। किससे सेटिंग हो रही है अरीना की? While I was sedated, I could still barely hear 2 people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Seishween. गाइस, किसी ने लाइक नहीं किया अब तक, लाइक कर देना। थैंक यू। Yeah, I heard one male voice and one female, so it should have been the 2 of them. I really can't make sense of this place. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Risley? I did, पर मैं इनको सच बताऊं कि नहीं बताऊं? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. यहाँ पे सबकी सेटिंग हो रही है। आर्कॉन की सेटिंग कौन करवाएगा? तुम करवाओगे ना? आओ डीएम में करवाओ। यू आर सच एन ओल्ड मेंबर ऑफ माई चैनल। तुम्हारा बनता है वो करवाना। Nobody else is around, and Miss Sejuin is also busy with something or other.
So let's just talk here. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Mirapede. That's true. Ooh, he's good. He got that right on the first try. अब इतना मुश्किल कहाँ है समझना? That's our Lenny. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? ईश्वरी जी आपकी जो सखियां हैं उनको लेकर आओ. हाँ हाँ और क्या कराओ, एक ग्रुप मीट कराओ यहाँ पे सब लोगों का. दिल्ली में जॉब मिल जाए बस, वहीं सेटिंग हो गई तुम्हारी. ओहो क्या बात है, सही बात है. I spent quite a long time ढूंढ लो thinking about दिल्ली में this. जॉब फिर. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Mirapede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Risley is basically the king of a no-man's land. बट ठीक है, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. बट दीज पीपल, एरिना हो गया, ये सब लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना. तो ईश्वरी, इट्स ऑल अप टू यू. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the 2 factions are pitted against each other, Risley will be free to move between the parties of interest. दिल्ली में कब चलता है आर्कॉन भैया बताओ, दिल्ली में कब क्या चलता है? वही तो मैं बोल रहा मैं ईश्वरी जी को, हमारी मॉड एंड आर्कॉन भाई सिंगल है, उनकी करानी है ना. अरे तुम अपने सोचो यार, मैं तो अपना देख लूँगा कुछ. आगुने को सेटिंग के लिए रिश्ते की जरूरत है. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. You're super smart. Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Risley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing. रिश्ता हम लेकर There's आते हैं. probably a ओके, आ secret जाओ. passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. हमारे घर वाले सीधे शादी करवाएंगे. सही बात है. Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Risley have known that? Maybe Risley House of Hearth का मेंबर रहा होगा पहले. मैं चला न्यूविलेट की स्टोरी क्वेस्ट करने, आई स्किप करने. अरे ये पूरी देख लो, उसके बाद चले जाना, खत्म होने वाली है ये. Or perhaps he didn't know and just wanted to bring Father over to his side, which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The 2 of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the 3 of us basically see you as family now. Aww. ओके आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो हाँ यार, थोड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं. मैं ज़्यादा बोलता नहीं लोगों को रुकने के लिए, पर रिक्वेस्ट खत्म होने वाली है. अगर ये बहुत ज़्यादा लंबी होती तो मैं कहता कि हाँ ठीक है चले जाओ. You have my gratitude. Thank you for protecting Lenny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? Given your strength, you might not need our help at all. But if you are ever in danger, we will try our best to protect you. लिनेट ने बोल दिया, मैं मान गया. लिनी बोलता मैं नहीं मानता. Aww, the sound of that makes Paimon feel all warm and safe inside. 1 second that off please. Aww.
वाह भूख. Paimon's hungry. Oh, you've done so much already. Go get some food. Alright, then we'll catch you guys another time. कल ही मेरे नेबरहुड में 2 11th के बच्चे पकड़े गए लड़की के साथ और हम लाइफ टाइम सिंगल है. वाह. और पार्ट 3 प्लीज. गुड. कहाँ जाने का है? Too slow. Wind rises. Behold! Now once again awe but without opening the mouth. तो आपके रूममेट को बोलो डीएम करे मुझे. Squall Fury! नीचे खुद जाओ इजी हो जाएगा. अच्छा आपने खाना खाने जाना है. आर्कन भाई मेरी आर्टिफैक्ट देखना फुरीना के लिए. ओके जी अभी देखेंगे. खत्म हो जाए एक बार जरा. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. ये फिर यहाँ आ गई. Are you here for dinner too, Miss Sijwin? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. ओ इनका तो खास डिनर बन रहा होगा ना. गाइज यहाँ पे किसी ने अब तक स्ट्रीम लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना. सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना. आर्कन क्वेस्ट ओवर होने वाली है जहाँ तक मुझे लग रहा है. You're right. She's actually sitting in the fortress cafeteria. What would you like to eat? सब कुछ. Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. ससी ससी नर्स. Me too. Don't forget Paimon. No problem. Just leave it to me. कट सीन 1 in 10 minutes, second in other 10. ओके 2 कट सीन्स हैं. क्या बात है. वैसे यार ट्रेलर के अंदर जो दिखाया था फुरीना रो रही थी. आर्ले चीनो भी आई थी. वो कट सीन कब आएगा उसका तो मुझे अता पता ही नहीं लग रहा कि वो भी आएगा यहाँ पे. So delicious. Paimon's so happy. Paimon wants to feast like this every day. सर अभी और 45 मिनट्स का बचा है. क्या बात कर रहे हो यार. 1 घंटे पहले किसने बोला था 45 मिनट्स का बचा है. अब कह रहे हो अभी 45 मिनट्स का बचा है. Full yet? How's the food? Delicious. I'm so glad चलो to जल्दी see जल्दी you करते all हैं. so happy. जल्दी करते हैं. See the expression on your face just now? The muscle here just moved. What, Sijwin? Do you do this to help your patients or to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. हाँ अभी 2:55 हो रहे हैं. अब देखते हैं कितना टाइम लगता है. Really? You're reminded of an older sister? With chat and all max 30. Great to hear. मैं वही करूँगा. मैं चैट भी जल्दी पढ़ लूँगा और मैं ये भी जल्दी स्किप करूँगा. पूरा पढ़ के. Risley's office. When you said that you were protecting Linny and his siblings as well. आज ही कंप्लीट करूँगा. आज तो आज ही कंप्लीट करूँगा. जिसने बोला था उसने स्किप की थी इसलिए 45 मिनट्स लग गए और आप एक शब्द पढ़ रहे हो. हाँ. Especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Thankfully, Clorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His grace also sealed the pipes after Clorand left, to make sure that Linny wouldn't impulsively chase after his brother. By the way, क्लोरीन भी तो फॉन्टेन की है. इसको कैसे इफेक्ट नहीं हुआ प्राइमोर्डियल सी वाटर से? Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Clorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linny as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. You were all super considerate and really thought everything through. It took me 6 hours without skipping. तो मैं पिछले 3 दिन से क्वेस्ट कर रहा हूँ ये. This is the 3rd day of this quest. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as he's been the leader. Guys, like दबा देना किसी ने नहीं किया हो तो. I really
wish Monsieur Nervulette would come down here more often too. I feel like he'd like it here, with all the darkness and chaos. फुरीना पे एचपी स्टैक करूं या सीआरसीडी? यार इसकी किट अभी तक पता नहीं है तो कह नहीं सकते. द प्राइमोर्डियल इज डाइल्यूटेड, दैट्स व्हाई. पर फिर फ्रेमिने को भी तो इफेक्ट हुआ ना, तो क्लोरीन को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो पूछ रहा हूं मैं. Get a good night's rest, you two. You both worked very hard. ओके, थोड़ा सा आगे बैठ के करते हैं ऐसे. अरे सिट नहीं करना, क्लोरीन से बात करते चल के. हाय क्लोरीन, बात करो. It's you two. How's dinner? It's all right. Miss Sijwin really put in a lot of effort. So we heard that Risley invited you to come down to help, and you saved Fremine too. You sure work super fast. Oh, it was child's play. Still, Paimon didn't know even champion duelists could take on side jobs. Oh, and why aren't you eating with Sijwin and the Duke? Won't you get bored eating by yourself? Miss Sijwin was with you, and the Duke has business of his own. Actually, didn't Navia say that you went out for dinner with her as well? Yeah. First time in a long time. So you mean you've gone out to dinner with her in the past? In the past, yes. You seem to be enjoying yourselves here. Things will be getting messy at the fortress soon. Don't run around unnecessarily. Okay, fortress messy very soon. इसको कैसे पता? Okay, किधर जाने का? The wind rises. भाई आप बोल रहे हो कि कोई लीक्स नहीं बताएगा, इसलिए कोई भी सही टाइम नहीं बता रहा. यार टाइम बताना लीक थोड़ी होता है. Squall Fury. अच्छा, रेस्ट करने जाना है. Quit following me. Too slow. Okay. So much has happened. हैंडबुक में कमीशंस हो गए, चेक करो. I'll see. Exhausted now that she's finally relaxed. Paimon's super sleepy. Are you sleepy too? God damn. इतने खर्राटे? Delicious. Paimon wants seconds for free. Out of my way! Okay. Out of my way! Okay. What happened? What's happening? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking! Is this it? Pressure finally टूट गया. Yelling. Paimon still wants to sleep. How can anyone sleep in the same room as Paimon? Damn. मेरे ख्याल से प्रेशर आ गया. प्रेशर निकल रहा है. पानी देख रहे हो, पानी निकल रहा है ऊपर से पाइप में से. ये पहले नहीं निकल रहा था यहाँ पे. सारे पाइपों में से पानी आ रहा है. यहाँ से ही पानी आ रहा है. What the hell is happening? What happened? Why is everyone running around? Hey, what are you doing? Onto the ship. There's no time to explain, mate. Goodbye. Hurried prisoner. Hey, wait! Damn. सब लोग वहीं भाग रहे हैं. What's wrong with these people? They won't even talk to us. सबको प्रेशर आ गया. They're here! Yeah! There you are! Who's thought? Oh, thank goodness! ये दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं. क्या बात है? Do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. La Faroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so Everyone you might slip come. through the cracks. Everyone is coming. Haven't you heard all the stories like that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. कौन? Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! म्यूजिक देख रहे हो पीछे? म्यूजिक देख रहे हो कैसे राइज हो रहा है?
Okay, whatever. The point is, you should come with us. Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and outwards. Damn. Oh no, it can't be that thing! Whoa, wait, what? What? Hey, where are you go? We have to go find the Duke! You two just go and get out! Go on without us! Hey, hey! Be careful! अरे भाग मोटू पतलू, ये मोटू पतलू मरेंगे. Please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Damn. Red alert, red alert, red alert. अबे यार. Loading screen. किधर जाने का है? पर नीचे जाना है क्या? ओह अच्छा नीचे. डाउन. ओह कट सीन आ गया. They're here. Just like I said. Ooh. Ooh. You're just in time. But be ready to run. ये पानी को मुक्का मारेगा क्या? ओह! भाई ने एक दूसरी सील क्रिएट कर दी क्रायो की, जो कि टूट गई. भले प्राइमोर्डियल वाटर है तो वाटर ही ना. गाइस भागो भागो भागो. Three, 2, 1. Ooh. Fucking awesome. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. जा 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 न्यूवलेट को बुलाओ, न्यूवलेट को बुलाओ. Go and find Neuvillette. The gate. How long do you think it'll hold? Come on, Florian. That depends on us. Damn. दो ही बचा के भागो. सही बात है. हिमांशु वेलकम वेलकम, गुड आफ्टरनून. सॉरी मैंने मैसेज नहीं पढ़ी देर से. आई वाज टू एनग्रोस्ड इन द कट सीन. जल्दी से न्यूवलेट को बताओ. आई गेस एक सेकंड का कट सीन भी आने वाला है, राइट? जो अब आएगा. इतने पानी की आवाज. न्यूवलेट आ गया. I need you to head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. You must protect Farina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Will do. You have my sincerest gratitude. सेकंड कट सीन. कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? राइडन का बच्चा जा रहा है फुरीना को प्रोटेक्ट करने. टेंशन नॉट. इधर इधर. Take it easy. Quit following me. Ooh, those two big reasons to love Chlorine was too smooth in cutscene. Yeah. Hello, Mermonia people over there. The knave is probably here already. We need to hurry. Come on, 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 come on. Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Neuvillette has left instructions. Please follow me. Though I'm sure Go he's meet already Farina. हाँ, वही जा रहा explained, हूँ. this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Farina to the best of your abilities. ऐसी होती है मेलुजिन. ये होती है मेलुजिन की शक्ल. सीजविन की तरह नहीं. समझ रहे हो? मैं सब समझ रहा हूँ. सब समझ रहा हूँ. आशु हेलो. अरे यार क्या बात है. आशु नाम तो बहुत अच्छा है. बहुत प्यारा नाम है आशु. वेलकम टू द चैनल. प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन एंड लाइक बटन. और क्या हालचाल? ओके कट सीन. मिस डबल स्टैंडर्ड फरीना. मैं खुश हो गई देख के. Oh,
So you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. Chlorine and Duke ship Archon. Absolutely. Siegewin Psycho. हाँ भाई वो है. Siegewin is mixed breed. पता नहीं mix है but she says I'm Melusine. She says I'm a Melusine. हाँ तो ईश्वर जी कहाँ तक बात पहुँच रही है? अरीना अपने पॉइंट बनाने में लगा हुआ है. सुजीन यूनिक नाम है. सुजीन यूनिक नाम है. आशु इज अ वेरी क्यूट नेम. हमने अभी तक आर्कन क्वेस्ट करा ही नहीं है. It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the Knave. One You of are. the 11 Fatui Harbingers. Yes, you are, ma'am. Yes, you are. Pleasure to meet you I've too. already prepared seats for you. Come, sit beside me. पहली बार किसी का नाम किसी हार्बिंजर से इसने इतने तरीके से बात की है. आई गेस चाइल्ड के साथ भी इसकी मीटिंग बड़ी अच्छी थी स्टार्टिंग की. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I आराम did से things. करेंगे. ओके आराम You से कर see, लेना. मैं तो we actually एंड तक recently पहुंचने वाला हूँ. agreed to get together for tea when we had the time. Cool. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? सुजीन पूछ रहा है आपका नाम. मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो? ओहो यार बड़ी शौक है क्या कहते हैं आर्लेचीन और फुरीना दोनों को पेस्ट्रीज का. Traveler, what do you think of this cake? It's quite tasty. I think I'm gonna have this too. That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I. I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. चाइल्ड ने धोखा दिया भूल गए. नहीं वो याद है लेकिन I'm talking about initial meet. चाइल्ड के साथ जो हमारी इनिशियल मीटिंग थी वो तो अच्छी थी ना. Since we're talking about him, ₹5 वाली I feel पेस्ट्री. like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. Yeah. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Nuvillette right in front of you. Yeah. पीठ में घुटना दे के मारा था न्यूविलेट ने चाइल्ड को. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. I must express my admiration for Monsieur Nuvillette. ओके खाने की आदत डाल लो. देख ले भाई अरीना. Tread lightly, tread carefully. Coming from you, that's not surprising at all. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. आप वेल्किन गिव अवे कर रहे हो. यस वेल्किन या किसी को अगर स्टार रेल का एक्सप्रेस पास चाहिए तो वो ले सकता है. दोनों में से कोई भी एक. स्कारामूश का धोखा भूल गए. स्कारामूश तो स्टार्टिंग से धोखेबाज था भाई. हालांकि स्कारामूश के साथ भी फर्स्ट मीटिंग हमारी अच्छी थी. नॉट टू फॉरगेट. जिन लोगों ने स्टार्टिंग वाला इवेंट ना किया हो तो उनको नहीं पता होगा. उनके लिए हम स्कारामूश से फर्स्ट टाइम मिले इनाजुमा में जहां उसने हमें मारने की कोशिश की. बट जो पुराने प्लेयर्स हैं दे नो हाउ दे फर्स्ट मेट स्कारामूश. Oh, and just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Mirapede. और कौन सा हार्बिंजर बाकी है? अभी तो बहुत हैं. 11 में से हम 4 से तो मिले हैं. अभी तो 7 हार्बिंजर बाकी हैं. And where did he go after leaving the fortress? इसकी टोन एकदम से चेंज हो गई. The fortress of Mirapede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? फर्स्ट टाइम तो मॉन्स्टर तो मिले थे मोना और फिशल के साथ. यस. That is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago.
Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. डॉक्टर भी हो गया, 5 से मिले हैं. 5 से कहाँ मिले? अच्छा हाँ, मैं सिनियोरा को तो भूल ही गया. यस, 5 से Do you मिले have हैं. any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the opera house. Is it something like that? All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Huh? चलो हम चलते हैं थोड़ा रेस्ट करने. Okay, Rishu, thank you for coming. But I think in future, child will betray harbingers if they try to harm traveler in Snezhnaya. Maybe, you never know. यहाँ पर मेरा फुरीना वाला थ्योरी लगाओ. तुम्हारा फुरीना वाला थ्योरी क्या था? Hold on. The water in the teacup is shaking. और ये टी फिर से ऑरेंज कलर की कैसे होगी भाई? I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. Huh? I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? Ooh, yes. Cutscene. New Willet is here finally. ये पीछे कौन है बे? My thanks to you both. I will take it from here. ये पीछे कौन था? Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. गरम Fanta. Sounds about right. Okay, let's see what New Willet can do. Primordial water के साथ. मुझे लगा इसके स्टोरी क्वेस्ट में आएगा ये सीन. आई जेन्युइनली थॉट इसके स्टोरी क्वेस्ट का सीन है. A day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. This sentence is too severe. मुझे लगता है मैं थोड़ी देर तक खड़ा हो सकता हूँ. किससे बात कर रहे हो? I don't think I can stand for a while now. Ooh, God damn! मजा ही आ गया. भाई ने फिजिकल दरवाजे की जगह वैसा दरवाजा लगा दिया. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. We're safe for now. Indeed. But only for now. Told you this quest is जोड़. Yeah, it is. धोखा ही धोखा है. धोखे से क्या डरना Genshin के यहाँ पर धोखे ही मिलना है. I win this bet. You owe me a present. Oh, let's go on a date then. Very well. It was indeed just as you said. Now you'll understand why he is in Archon quest at the end of his quest. मुझे लगा था ये जो सीन आ रहा है ना, ये वाला, ये सीन इसकी खुद की स्टोरी क्वेस्ट के अंदर आएगा. But I'm quite surprised कि Archon quest क्लास में आया. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? He already has tons of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it?
अच्छा, now you'll understand why he is in Archon quest at the end of his quest. Oh, समझ गया. So now I have to do his quest to understand इसके पास इतनी power कैसे है. Of course, मतलब उसकी quest में तो पता चलेगा ही ना कि who he is finally. No spoilers, please. I'll check that in his quest only. Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. लेकिन यार मज़ा आ गया कसम से. Archon quest मुझे मतलब कि बीच में थोड़ा slow हो गया था. थोड़ा नहीं, बहुत slow हो गया था. लेकिन starting और end it was nice. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. अब यही पानी अपने चार्ज अटैक में यूज करेंगे, एनिमीज को वेट करेगा. ओहो, नॉट मॉड इधर भी हो. नॉट मॉड हर जगह होता है. That was obviously a joke. नॉट मॉड इज सर्वत्र. Anyway, you've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here Movie if you have तो a OP pressing है. matter. Yes, true. We all know you can't leave Palais Mermonia for long. Nope, एंड में ही आएगा ये क्वेस्ट. अच्छा, इसी क्वेस्ट के एंड में आएगा. ओ, समझ गया. ओके. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. एक सवाल है, बिल्कुल पूछिए भाई. मिस्टर काकाशी. गाइस, लाइक दबा देना जिसने नहीं किया हो. अगर कोई नया सब्सक्राइब कर लेना. डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है तो पिन्ड कमेंट के अंदर डिस्कॉर्ड का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. I must say, we've spent long enough playing house. ये यार, ये चाय ना बड़ी गंदी लग रही है. और ये कप है, कटोरे के अंदर चाय पी रही है. भाई ये चाय का कटोरा अगर अपनी गोद में रख लेना, पूरी गोद में फैल जाए. इतना बड़ा चाय का कप है ये. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. मेरा चैट नहीं आ रहा क्या? बस ये आया. That's what I originally thought. एक But मिनट. looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? एंडिंग इज नॉट सेटिस्फाइंग यार. फाइट वगैरह के बिना कैसे चलेगा? लेकिन अभी आर्कन क्वेस्ट फिनिश नहीं हुए भाई. अभी आर्कन क्वेस्ट बाकी आनी है. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द आर्कन क्वेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. न्यूवी सामने से हटो कैमरामैन. क्लोरीन पे जूम करो. आर्कन क्वेस्ट में लास्ट में जो चाइल्ड दिखता है, क्या उसका क्या मतलब है भाई? अभी तक तो देखा ही नहीं मैंने. आर्कन क्वेस्ट चल रही है तो मुझे लास्ट का पूछ रहे हो. लास्ट में चाइल्ड दिखता है, उसका मतलब क्या है? दे दिया ना स्पॉइलर. What are you trying to say? अनिल, you're here too. अनिल is a very very old subscriber of mine. 1 साल से अनिल यहाँ पे सब्सक्राइबर है. At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontainian. You know the prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Heart have devoted everything to saving their homeland. Lavneet bhai, welcome back. दिलावर भाई, ये कैसा क्वेश्चन था? They say the reason why child was committed guilty is because he awoke the primordial sea in his whale power. Oh. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. वो पहली बार ये मुंह खोल के बोली है किसी के सामने बिना डरे. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? Save us? How are the people you've sworn to protect supposed to survive in a land that will soon disappear beneath the waves? पता नहीं हाइड्रो आर्कॉन नेव से इतना डर क्यों रही है. कुछ तो रीजन होगा, बट अभी इसने जो बोला बिना डरे बोला. I have my ways. देखो सीधा बोल रहा And I've been working on them for all this time. देखा खड़ी हो गई. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. ये आई ना, गले में थोड़ी पावर आई ना इसके अब. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am,
I will be able to hold my head up high. देखा, Furina is not acting like her usual self. She's actually seriously refuting the knave's accusation. She means what she says. She's not putting on a front. मेरे ख्याल से इसकी दूसरी personality सामने आ गई है. Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. भाई मेरा चैट आया क्या ऊपर? तुम्हारा चैट यार ऊपर, इसके ऊपर तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा. नहीं भाई, लाइफ ऑफ विनर्स फिर से चेंज हो गया. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such as your emergency response plan for the impending disaster? कुछ तो है, इसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है बात करने में. जब ये घबराती है तो इसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है. अभी पीछे जब इसने बोला इसकी पर्सनालिटी डिफरेंट थी. आई थिंक शी इज इनसिक्योर विद प्रोफेसी एंड इज हेल्पलेस टू स्टॉप इट, बट द एफर्ट शी इज मेकिंग आर ट्रू. गिविंग हर द बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हियर एंड देयर. Yes, 450 है कैरेक्टर बैनर पर और 60 पिटी है. I hope you win your 50. देखा, personality change. Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. डांस करो सब इस नाम के ऊपर. And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The Oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. Okay. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Nothing. Right. I almost forgot. Udex Nouvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Farina be like, sometimes she is Ambi, sometimes she is अपरिचित. अमर अकबर एंथनी याद आ गया है. अमर अकबर एंथनी याद कैसे आ गया? Yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Yep. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. Okay, Furina की E skill प्रेस करोगे तो एबिलिटी के साथ क्या कपड़े भी चेंज होते हैं? भाई ध्यान नहीं दिया. अमर अकबर एंथनी जैसा कॉपीराइट है. मुझे अमर अकबर एंथनी कहाँ से आ गया समझ नहीं आया मुझे अब You तक. too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. एक कैरेक्टर में 3 पर्सोना जैसा. नहीं, एक कैरेक्टर में 2 ही तो पर्सोना है. 3 कहाँ से आ गए? सब लोग पेस्ट्री खा गए बढ़िया वाली. Oh, Paimon's super full. I really think she has dual personality if she is the real Archon, just like sleepwalking Layla. हाँ, वही. She does. एक सीन के अंदर दिखाया भी था, इसकी दोनों पर्सनालिटी दिखाई थी एक सीन के अंदर. कोर्ट रूम का सीन याद है? If it's on my tea table, it must be of the highest quality.
Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. यार इतनी अच्छी I'm पोएट sure the लिखी थी cake धोखे also के felt ऊपर greatly मैसेज में, honored to be पर अब featured at भूल Miss गए. Farina's table, and I was merely catering to Miss दोबारा लिख दो. Farina's tastes, seeking a chance to chat over See the chat above it. उसके ऊपर जॉब मिल गया फिर जाएंगे वहाँ, ये लिखा हुआ है. I really think she has some dual personality. उसके ऊपर जो तुम्हारी चैट है उसमें ये लिखा हुआ है. I think it's related to the two sides of justice. Finding balance between both must be tough if she's the real Archon of justice. That's some deep thinking. It is getting late. Plus she has two different Why don't eyes. we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, traveler? We could use the opportunity to discuss child before I must be on my way. Of course. Paimon coming too. हाँ तू कहाँ जाएगी? तो जुड़ी हुई है मुझसे रस्सी से. Okay, let's go. फुरीना से बात करूँ, क्या बोल रही है ये? The tea party. Why are you looking at me like that? चल भाग. किधर जाने का है? यहीं तो जाना. Okay. Out of the gate. ओ फिर से ट्रैवलर अकेला हो गया, सिंगल हो गया. मैं किसी डोमेन के अंदर हूँ क्या यार? क्या यार बार बार डूबने आता. जोरो भाई वेलकम. इतनी देर बाद आ रहे हो यार तुम. 3 घंटे की स्ट्रीम हो गई है मेरी. धूप में बाप जलता है, चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है. प्लीज डोंट, प्लीज डोंट. गिवन हाउ ऑल आर्कॉन्स आर बाउंड टू द एलिमेंट कंट्रीज आइडियोलॉजी, इट मेक्स सेंस. अब देखना बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी. कभी बाहर जाओगे आप? फुरीना की बात नहीं किया. ओके ओके, नो स्पॉयलर्स, नो स्पॉयलर्स. फॉलो द नेव टू द एग्जिट. नेव है कहाँ पे? अब आएगी. Yes. I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. Finally. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply about my children. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. Venti is bound to freedom, Rex is bound to contract, A is bound to eternity, Nahida to knowledge. So with the two sides of justice, Furina must have dual personality, since Nahida saying she's weird. हाँ, she's a little eccentric, उसने बोला था. अरीना मैं तुम्हारा मैसेज ही नहीं पढ़ रहा. मैंने पहली लाइन पढ़ी, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा. I know you just returned from the fortress of इतनी बढ़िया क्वेस्ट चल रही है, तुम शायरी मार रहे हो ऐसी I have no वाली. intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them, especially Linny. You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Furina? She's an idiot. You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. क्या इतना बुरा हूँ मैं माने? तुम्हारी शायरी बहुत बुरी है. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meropide. वाह, ये इसका वो है स्पाई. इतना ऑब्वियस. अभी तक नहीं हुई क्वेस्ट भाई, लंबी क्वेस्ट है यार. You get 2 lords for Furina. Okay. 2 बजे खत्म करने का इरादा था ना भाई. इरादा तो था. क्वेस्ट में पता आर्कन क्वेस्ट कितनी लंबी चल जाती है. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? थोड़ा आराम से बैठूं, कमर दर्द हो गई मेरी. Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. लोगों ने धोखा दे दिया. किसने? Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Furina, a Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that
She often seems more like a celebrity than a working Archon. I really think the gnosis is in court with how the ये भी मतलब कि that consciousness that the oratrice mécanique d'analyse cardinal has, मुझे लगता है कि वो consciousness उस gnosis की वजह से ही आ रही है. 45 मिनट्स बाकी है बोलने वाले लोग. हाँ भाई 2 घंटे हो गए 45 मिनट सुन रहा हूँ मैं. Oh, come over here, you little critter, you. ये कौन है भाई? Who the hell is she? You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. ओ ये अबे ये तो वही है. अबे ये तो ये है क्या कहते हैं आर्लेचिनो है ये दूसरी ड्रेस के अंदर. मुझे तो ओरेट्रीज की बैटरी लग रहा है. नोसिस एग्जैक्टली भाई. उसका नाम कैसे याद कर लिया? ओरेट्रीज मैकेनिक d'analyse कार्डिनल. क्योंकि गाने से नाम है ना, इसमें डांस कर सकते हैं. ओरेट्रीज मैकेनिक d'analyse कार्डिनल. Anything left unguarded is usually just bait. मारने वाली इसको क्या? But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. What the hell is this? What? It's just as I guessed in the second before I struck. The hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. 2 Archon quest है क्या 4.1 में या फिर एक ही है? Archon quest तो एक ही होती है भाई. Acts उसके अलग अलग होते हैं. चलो मैं चला खाना खाने. ओके यार मुझे बहुत देर से भूख लग रही है पर एक क्वेस्ट के चक्कर में बैठा हुआ हूँ मैं. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me. I'm begging you, please. ये कैसी आर्कॉन है वे? आर्लेचिनो की बर्स्ट ऑन करोगे तो ऐसी बन जाएगी. काश. The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. इसीलिए डरती है ये नेव से. इसको पता लग गया था ये नेव है. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Eudex Neuvillette is actually the genuine article. I'm sacrificing sleep for this quest. हाँ यार, you came back from office and you have stuck so far. I really appreciate it. मैं जब स्ट्रीम पे आया तभी जस्ट पार्ट 3 खत्म हुआ था. हाँ. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Ridesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a Harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Eudex Neuvillette. Oh, and I have an additional mission for you three. I might recreate Nahida's special dish when I go home and send you a picture. Okay, do that. I would love to see. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Eudex Neuvillette. Okay. The initiative belongs to the House of the Hearth.
My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Lenny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. लगता है फुरीना का वेपन स्किप करना पड़ेगा, आर्लेचिनो पुल करना होगा. बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. Do you think Furina might be the first sword Archon? What do you mean might be? She is the first sword Archon. Might का तो चौथी तो आई है. 2 पोलर वाले हैं, एक कैटलिस्ट वाली है, एक अपना क्या कहते हैं बो वाला है. You should know the rest. Lenny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything even if you shouted it from the rooftops. After all, even Furina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Furina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Iudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either. I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Iudex Neuvillette or Furina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. वो आर्कॉन है भी या नहीं, होयो ने ऑफिशियल कहाँ तो किया है. हाँ ये तो है, होयो ने अब तक ऑफिशियल नहीं किया कि शी इज द हाइड्रो आर्कॉन. फुरीना की स्वॉर्ड बहुत आई कैची है. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. और अभी तक फुरीना की कोई स्टोरी क्वेस्ट नहीं आई है. जब तक वो रिलीज नहीं होगी कोई स्टोरी क्वेस्ट नहीं आएगी. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Even Neuvillette doesn't have a vision, directly implying he is a dragon. अब तक तो यही लग रहा है. I have Ayato C1 with signature weapons, so I don't need Neuvillette. वो भी सही है. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Neuvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Furina. She looks like friendly. मैं पूरे एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा था कि नेव कुछ सीन करेगी, वीकली बॉस बनेगी. इतनी जल्दी नहीं भाई. वीकली बॉस तो नहीं. शीज अब तक ऐसा कोई इंडिकेशन आया नहीं. I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. No, Nuvi Otter arrived. इसको लोग Otter के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? The Knave has turned up the pressure on Furina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. Permission granted. Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. बोल नहीं रहा बंदा. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. He resembles an otter. How? You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase "you guys" you are referring to Furina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? ईश्वरी को सब पता है. Ears in the back of his head. फिर भी it's not
Oh, rain on lagi. Hydro Dragon is sad. Hydro Dragon, please don't cry. Ooh, he is the Hydro Dragon. कितना हिंट दोगे भाई? इससे ज्यादा हिंट चाहिए भी नहीं. बंदा कितना सैड है और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई. You may be closer to the truth than you think. Done. Pakka. Final. Confirm. He is the Hydro Dragon. Oh? And what are you thinking? He is the Dragon Sovereign of the water. The dragon of... what? Huh? Please do not be so surprised. Told you. Farina? He just admitted he's a dragon. My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Confirmed, guys, confirmed. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. ये दूसरा ड्रैगन सॉवरन हमें मिला है अपेप के बाद. कुछ लोग कहेंगे एजदहा इज नॉट द ड्रैगन सॉवरन. ही इज द जियो ड्रैगन बट इज नॉट द ड्रैगन सॉवरन. ड्रैगन सॉवरन वो थे जो प्राइमोर्डियल 1 के आने से पहले लैंड पे रूल करते थे. ही वाज द एक्चुअल रूलर ऑफ फॉन्टेन बिफोर आर्कॉन्स केम. There's still something Paimon wants to ask you though. I told you, people have been telling me this for since before New Village की ड्रिप मार्केटिंग आई थी. Please go ahead. If you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress... एनिमो ड्रैगन भी हमको अब तक नहीं दिखा है. एंड वो जो अपना वो है क्या कहते हैं स्टॉर्म टेरर है. इज नॉट द एनिमो ड्रैगन. मतलब ही इज नॉट द... देखो एलिमेंटल ड्रैगन एंड एलिमेंटल ड्रैगन सॉवरन्स आर डिफरेंट थिंग्स. ये एलिमेंटल ड्रैगन सॉवरन है. ही वाज द ओरिजिनल हाइड्रो पावर इन द तेवात. ओरिजिनल वन. Then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? एजदहा तो मेंढक है. He is about to drop a huge hint on how Archon is created. Okay. None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. Mm-hmm. They say that when the first usurper arrived on Tivat, Okay. they seized a part of the dragon's power. Okay. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. Oh. Wait. No. मतलब कि प्राइमोर्डियल 1 ने ड्रैगन सॉवरन से उनकी पावर छीन के आर्कॉन्स को दी. पर किस फॉर्म में? क्योंकि आर्कॉन्स जो थे they had like power with them before they became archons. Gnosis नहीं, लेकिन बहुत सारे आर्कॉन्स उनका Gnosis नहीं है, but they still have their power. There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. Okay. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Zhongli is also a Geo Dragon Sovereign, maybe, but also Archon, maybe. All maybe. Zhongli may be the original Dragon Sovereign, but maybe. Dwalin is one of the 4 winds. Dwalin is not the elemental Dragon Sovereign. He's one of the 4 winds. Gnosis was created using dragon power. But Gnosis power नहीं देती ना. Gnosis आपको authority देती है over the element. ठीक है. लेकिन अगर Gnosis आपकी lose हो जाए तो आपकी power lose नहीं होती. Zhongli अभी भी उतना ही powerful है. Raiden उतनी powerful है. Nahida उतनी powerful है. और हमारा Venti भी उतना ही powerful है जितना वो Gnosis से पहले था. आपका पिंक कम लग रहा है. पिंक कम लग रहा है मतलब. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. This quest raised far more questions than it answered. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too.
Traveler, why don't we pay another visit to the Fortress of Meripede? Paimon is a little worried. We'll see you another time. Take care. 200 ms से ज़्यादा. हाँ मेरा 294 ms है. 294 ms है. गाइज मेरे ख्याल से मुझे यहीं पर क्वेस्ट बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो चली ही जा रही खत्म ही नहीं हो रही. मैं बाकी की कल पूरी कर लूंगा. अबे ये किस खुशी में आए हैं मेरे पास? अच्छा, ड्रीम ऑफ रोविंग स्टार्स वेब इवेंट. ओ वेब इवेंट किया था मैंने उसकी. क्योंकि भाई ये क्वेस्ट तो चले ही जा रही है. इसका जो भी थोड़ा इट्स अबाउट टू एंड. चलो यार कर लेता हूँ. मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है. लिटरली मेरी स्ट्रीम को चलते हुए कितनी देर हो गई? लेट मी चेक. शिट, मेरी रिकॉर्डिंग भी बंद होगी पीछे से क्योंकि डिस्क में स्पेस खत्म हो गया. बताओ, मेरी स्ट्रीम को चलते हुए 4 घंटे 17 मिनट हो गए भाई. इट्स एंडिंग. चलो जल्दी से एंड करते हैं इसको. लेट्स गो. रिकॉर्डिंग चल रही थी, रिकॉर्डिंग चलते चलते बंद होगी मेरी. सोचो AR कितना है आपका? AR 59. सिद्धार्थ, एपिक में गया कि तू एनिमी फैन है. 4 hours प्लस ओनली एनीमे. अच्छा मैं मान गया भाई. यार क्वेस्ट खत्म होने वाली है. ईश्वरी डोंट प्ले मी की क्वेस्ट खत्म होने वाली है. पता लगा भी आधा घंटा और चले. अगर आधा घंटा भी चलेगी तो मुझे बाद में करनी पड़ेगी. उसके बाद रिव्यू करोगे? नहीं, रिव्यू मैं तुम्हारा तो कर ही दूंगा यार. तुम्हारा तो कर दूंगा, बाकी और रिव्यू अभी नहीं कर रहा मैं. तुमने इतनी देर से बोला हुआ है. सो आई विल डू योर्स. अबे किधर जाने का है? अच्छा स्किप ऑल द डायलॉग्स. नहीं वो नहीं कर सकता मैं. एंस 1303M अभी 50-50 हार गया. अरे किस पे हार गए? फाइनल कटसीन अवेट्स. अभी पहला एक और कटसीन आने वाला है. जाने से पहले आर्टिफैक्ट देखना फरीना के लिए. ओके भाई. Yeah, I was working on something so I forgot. स्किप ऑल द डायलॉग्स एक्सेप्ट क्लोरीन. ओके चलो ठीक है. स्केच हो गया है कंप्लीट. बस 15 मिनट लगेगा. ओके गाइस सब लोग लाइक दबा दें जिसने नहीं किया अब तक. That's no excuse for... Okay. Hello Okay, there. I'm skipping all the dialogues It's been now. quite the mess. And you? Yep. It can be. I mean, Oh yeah. You two really... Not at all. ओके सही बात है. ये सारे बेकार के डायलॉग्स हैं. टेलीपोर्ट. खाली क्लोरीन वाला मैं स्किप नहीं करूंगा. एक मिनट. कैंसल नेविगेशन. पहले इसको नेविगेट करता हूँ. नेविगेट. मैं भी बोल रहा हूँ. हाँ भाई तुम्हारा भी देख लूंगा देवू भाई. टेंशन ना लो. अरीना ये किसकी आईडी दे दी भाई तुमने मुझे? You guys are... You guys... Ah, All right, up. hey, what? I was also... Whenever he... Hey. These two. They sure are a lot more... Oh, well, if you say so. Anyway, I'm AR60 प्लेयर. अच्छा अरे भाई मैं भी अगर इस गेम को बीच में 5-6 महीने के लिए खेलना छोड़ता नहीं ना तो मेरा भी AR60 तो हो ही जाता अब तक यार. ऊपर ये तो नीचे जा रही है. ऊपर जाने लिफ्ट कहाँ है? Quit following me. Too slow. ये रही. बहुत लोग इधर AR60 हैं. मैं ही AR59 हूँ. मैंने बीच में 5-6 महीने के लिए गेम खेलनी छोड़ दी थी वरना मेरे अब तक AR60 टच हो जाता आराम से. और ऊपर जाना है. दूसरी लिफ्ट ढूंढनी पड़ेगी. यार इस चक्कर में ना ये देख रहे हो वो ऊपर जाने लिफ्ट वही है क्या? मैं ऊपर कैसे जाऊं? What the hell is this? Quit following me. Quit following me.
The wind rises. ये तो एक ही लिफ्ट है यार, ऊपर कैसे जाऊं मैं? Quit following me. ये लिफ्ट नीचे जा रही है। अबे यार इसी में मेरा टाइम निकल जाएगा यार। टीपी कहाँ करूं? अभी भी ऊपर है। What is happening यार? यहाँ टीपी करूं? अब नीचे दिखा रहा है। मैं आती हूँ तुम देखते नहीं बस देबू। मैं AR-45 वाले आउट ऑफ चैट फिर तो। ओह सॉरी माही, आई स्किप्ड योर मैसेज। आई एम सो सॉरी। मैं यार एक क्वेस्ट जल्दी से फिनिश करने के चक्कर में बैठा हुआ हूँ, सो आई काइंड ऑफ स्किप्ड द मैसेजेस। अब ऊपर जाना है, यहाँ से कहाँ ऊपर जाना है यार? फिर से यहाँ जाना है क्या? अभी सामने जाना है। क्लोरिन इज ऑन राइट साइड। अब एक ही बची है, यही होगा। अच्छा लिनेट है। अच्छा क्लोरिन से बात करनी है क्या वहाँ उसके अंदर? Now guess, what suit will this next card be? क्लोरिन वहां पर थी क्या, जहाँ पे यार जहाँ पे कैफेटेरिया था? भूख किसी की ग्रेटर देन क्वेस्ट। भाई मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है, मैंने अब तक लंच भी नहीं किया इस क्वेस्ट के चक्कर में। Well, look who it is. Traveler, Paima. Looks like you're recovering nicely. Thanks to everyone. Oh, right. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. She didn't want to stress you out, that's all. She's right. जब बात करना important नहीं है ना, फिर ठीक है। I'll just finish the quest quickly. We went back to the... You meant father? She said a few things that were, a bit... Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power. Father is very capable, and also trustworthy. मैंने भी just breakfast किया. But you have an option to go and eat something ना, मेरे पास तो वो भी नहीं है. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Stream के ऊपर खाना मैंने छोड़ दिया, मैं stream पे खाता नहीं हूँ. Got it. That does sound like something that father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will... For real? Then Paima wants another... Another implies that you were already served... Well, next time. Come on. हो गया? अबे अभी भी रह गया? Behold. Ah shit. अब रिजली का ऑफिस जाना है. से बात करना क्लोरीन से, पर क्लोरीन इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट तो ठीक है. हाँ भाई. Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come? We wanted to see how the fortress is doing. Is everything... We're fine for the most part. Neuvillette came down. If that's the case, why don't you just ask him to stay? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the... He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. हालांकि मैं ये पूरा का पूरा पढ़ रहा हूँ. Miss Sijuin's gift with him, though. डायलॉग मैं पूरे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी से स्किप कर रहा हूँ. मोनेटाइज होने के बाद शिट मत बोलना, $1 चिपका देंगे. ओहो. You know why I say Chlorine and Navi are couple? Why? He sure sounds... Miss Cloran has left as well. She... Were the gifts milk? Neuvillette got the milkshake. Cloran received lipstick instead. Those aren't even... Well, it's Neuvillette's own fault for making Sijuin worried about his health by working so much.
Oh, and I have some gifts here. Are these from Siege? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You have... For real? Then we can stay here for... You may access the cafeteria. Just remember to come complete your paperwork once it's time for you. Lipstick, very realistic. खत्म? अच्छा, return to dormitories to rest. Okay. अरे 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 यार तेरा हद ही है यार. Come on येलान. अरे क्लोरीन से ही बात करनी है. अरे यार मतलब तुम सबसे बात कराओगे मेरी. कहाँ है कैफेटेरिया? वेयर द हेल इज कैफेटेरिया? अब मैं कैफेटेरिया ढूंढूं. ये रहा इस फ्लोर पे ना. गुड. ड्रिंक योर मिल्क एंड एंड योर स्ट्रीम. आई वांट टू. अब लिखा कैफेटेरिया ऊपर है. यार क्या हो रहा है यार मेरे साथ ये. कौन कौन से कैरेक्टर हैं आपके पास? बहुत सारे. अरे कंफर्म छोड़, भी नेविगेट करना है यहाँ पे यार. Take it easy. कहाँ है क्लोरीन? सीजवीन खड़ी है यहाँ पे. क्लोरीन कहाँ है? कहाँ है क्लोरीन? तुमने ऐसे भगाया मुझे इधर से उधर. क्लोरीन गई. अरे यार तो मुझे भी पता है वो गई. तुम मुझे भगा रही हो इधर से उधर फालतू में. तुमने बोला जोर से क्लोरीन. मेरे को लोग पिछले 2 घंटे से लू बना रहे हैं. बस 45 मिनट की क्वेस्ट है. बस 45 मिनट की क्वेस्ट है. 5 बज गए क्वेस्ट करते करते भाई. मेरी रिकॉर्डिंग बंद होगी पीछे. मेरे पीसी में स्पेस खत्म हो गया. Back in our cell again. We're no longer... Sure feels that way. Huh? How did you know? Hey, that's not... It's like we've now gone to so many places. There are so many bad things in the world, and you're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Just our thoughts making Paimon giddy. भाई 4 बज रहे. मैं 11:30 बजे स्ट्रीम कर रहा हूँ. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside our cell. The promoting... We should be safe now. All right then. Good night to you, traveler. और ट्रेलर के अंदर जो 2-4 सीन दिखाए थे वो तब तक हुए भी नहीं है. फिर से विजन आ गई. ओके. मतलब चाइल्ड बाहर निकल गया था और ऊपर आई वेल. ये चाइल्ड की वेल है. Thank God, finally over. मुझे ऐसा लगता है कि स्कर्क जो है, जो चाइल्ड की मास्टर है स्कर्क, उसने चाइल्ड को बचा लिया. लास्ट में वो वेल की फॉर्म में आई और उसने चाइल्ड को बचा लिया. दैट्स व्हाट आई फील. फाइनली गाइस खत्म. हाँ तो भाई पैराबॉय कहाँ है तुम्हारी आईडी? बताओ. तुम्हारे कैरेक्टर्स देखते हैं. अरे ना भाई रुक जाओ. अभी पहले 2 लोग ऑलरेडी अपनी आईडी के लेके बैठे हुए हैं. अब जरा उनका देखना तो पहले मुझे, और उसके बाद हम चलेंगे. पैराबॉय हो यहाँ पे या नहीं हो? वो वेल नेक्स्ट वीकली बॉस है. हाँ वो मुझे पता है. दैट वेल इज नेक्स्ट वीकली बॉस.
बट आई स्टिल फील, अरे तुम्हारी तो आईडी बाहर वाली है, विदेशी आईडी है भाई, हैं एंका पे देखनी पड़ेगी। तुम्हारी आईडी विदेशी है और देबू भाई की भी आईडी है। वो मुझे पता है वो वेल वो है, लेकिन आई डू फील कि ये जो क्या कहते वेल थी ना, ये चाइल्ड की जो मास्टर थी स्कर्क, ये वो है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके लेट मी टेल यू, ईश्वर कुछ बताने वाली। व्हाट क्लोरीन सेज, ओके व्हाट डज शी से, बताओ बताओ। 6118233820 ओके डैम। आर C3 Raiden with R1 engulfing lightning 70 151 286 OP भाई OP। कागुराज वैरायटी के साथ याई मीको 95 179। यार तुम्हें लगता है तुम्हारा क्रिट डैमेज थोड़ा सा कम है, कंसिडरिंग कागुराज वैरायटी है तुम्हारे पास, क्रिट रेट थोड़ा कम चलेगा इसके अंदर, थोड़ा क्रिट डैमेज दे दो यार इसको बेचारी को। 2 पीस थंडरिंग 2 पीस ग्लैडिएटर, बहुत बढ़िया। ये लान तुम्हारी C1 के ऊपर है विद aqua simulacra R1 38,000 HP 65 246 OP भाई OP। 73,000 HP के साथ, 73,000 HP के साथ कीव का साथ नीलू, गॉड डैम। ओके 88 224 रियली नाइस डेथ मैच के साथ, बहुत बढ़िया। R1 C0, इसको C1 कर लो यार, ये आई हुई है बैनर के ऊपर, इसको C1 करो, तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी। न्यू की स्टोरी को 45 मिनट्स की है, इतनी बेल्टों से मारूंगा ना दोबारा किसी ने को 45 मिनट्स बोला तो। So traveler asks how their dinner went with Navia. Chlorine says it was good, but they've been going on dinner in the past. When traveler tries to ask more, she clears her throat and changes subject. मैंने पूछा था, तुमने डायलॉग मिस कर दिया, मैं बात कर चुका हूँ क्लोरीन से, ये बात हो गई है क्लोरीन से। You must not be here उस टाइम पे। Okay, the Nahida is here 52 160 with how much EM? 635. Very balanced, very balanced. Wandering even star दिया तुमने, very balanced. And here is your primordial jade cutter के साथ Alhaitham with 82 191. Nice with 4 piece gilded. Kazuha 992 elemental mastery Cyphos moonlight के साथ C0 पे है। इसको क्राउन मार दो यार, काजुआ के कुछ को तो क्राउन करो, इन दो को तो क्राउन करना बनता है। काजुआ नीड्स टू बी क्राउन, काजुआ डिजर्व्स टू बी क्राउन। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, रियली नाइस अकाउंट, मजा आ गया। वर्थ द वेट। चलो देवू भाई के देखते हैं अब। 8297833135 हैं? देवू भाई ये दिखानी थी क्या? ट्रैवलर दिखाना था खाली अपना, लेवल 80 का मिस स्प्लिटर के साथ 63 185। और कौन से एलिमेंट के ऊपर है ये? हाइड्रो एलिमेंट के ऊपर है, लग तो हाइड्रो एलिमेंट रहा है ना। न्यूलेट की स्टोरीज एटलीस्ट 1.5 आवर लॉन्ग, वो तो मैं फिर भी एक सेटिंग में कर लूंगा। बट ये जो मैंने आज क्वेस्ट किया ना, दिस क्वेस्ट वाज नॉट सपोज टू बी डन इन एक सेटिंग के अंदर, ये आधी कल हो सकती थी, पर लोगों ने मेरे को 45 मिनट करके करवा दी। अरे वो फुरीना की, अच्छा तुम्हें वो समझ गया सॉरी, तुम्हें आर्टिफैक्ट्स देखने फुरीना के लिए, तो तुमने मेयर शाओ 4 पीस गोल्डन ट्रूप किया हुआ है, जिसमें तुम्हारा 63 सही है, और क्रिट रेट वाला तुमने सर्किट दिया हुआ है, क्रिट डैमेज तुम्हें, अच्छे आर्टिफैक्ट्स हैं, फुरीना के काम आ जाएंगे भाई, काम आ जाएंगे। वेरी नाइस। हाँ भाई अरीना, अब तुम्हारा क्या देखना है? मेरे वाला इनटेक ही देखो, इन गेम ही देखो, तुम्हारा इन गेम यहाँ देख लेंगे, क्या दिक्कत है, एक ही बात है। हाँ अरीना 8794242504 अब खुला ही हुआ है, तो देखते हैं। एएस अरीना C1 वॉन्डरर विद R1 तुल्ला 7200 4 पीस डेजर्ट पवेलियन। C6 फारूजान with 197% एनर्जी रिचार्ज। C1 बेनेट, ओके चलो बेनेट ठीक है तुम्हारा। C1 बेनेट है सैपवुड ब्लेड के साथ। C1 शिंगचो गुड स्टैट्स। C2 शांगलिंग गुड स्टैट्स। इसमें मज़ा नहीं आता, और कितना मज़ा लोगे। बाकी तुम्हारी याओ ये सब तो बिल्ड नहीं है ठीक से। सही भाई, तुम्हारा वॉन्डर दिखाना था तुम्हें बेसिकली अपना। देवू तुम्हारी आईडी तो मैं लेके भागूंगी एक दिन। गाइस चलो आज की स्ट्रीम ख़त्म करते हैं। आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी भूखा, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। किसने लाइक नहीं किया, जाते हैं तो लाइक कर जाओ,
ठीक है, सब्सक्राइब कर जाना और डिस्कॉर्ड का लिंक पिंड है कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर मैं डिस्कॉर्ड पे मिलता हूँ पूरा दिन। हम डिस्कॉर्ड पे पाए जाते हैं पूरे दिन। ये वाला आईडी मिलेगा आपको ट्राई करने के लिए। अच्छा, ओके, चलो। आज की स्ट्रीम बहुत अच्छी थी। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम्स ऑफ ऑल टाइम, माई पर्सनली, और किसी की बात नहीं कर रहा, बट इट वॉज रियली गुड, मज़ा ही आ गया। ठीक है गाइस, चलो अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ डिस्कॉर्ड पे आ जाओ बाकी सब जिसने नहीं किया। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर, बाय, सी यू। It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my soul. It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my It's out of my hands, but I'm still